part to the left is your sense that the party also is not in sync with the popular sentiment. अब मैंने अपना रास्ता ले लिया, इसलिए देखिए मेरा इशू में ना कांग्रेस मुझको कुछ बोल सकता है ना कांग्रेस इंटरनेशनल कांग्रेस का तो भारत जोड़ो यात्रा है, उसके बाद कांग्रेस के दावा थे कि पूरे भारत के समर्थन लोगों को फाइट द फैक्ट दैट इज सपोर्टर ऑफ द इंडिया दे स्टिल फील दैट कंट्री नीड्स सपोर्ट। मेरा एक सिस्टम है, इसलिए हमारा रहन सहन खाना उना सिस्टम पूरा सा मेरा अलग है। आपका जान को डिफेंड करवाने का मन नहीं था, आप खुद ही साथ में डिफेंड होना है, तो उसका मेरा क्या इनडायरेक्टली I'm a student of economics. Go ahead. You know I'm the student of economics. Right now, what Congress party is doing? तो ये स्टेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि मुसलमान आपका नाम चल रहा था कि 50 से 60 को लड़वाया भी जाए कांग्रेस की टिकट पर, इसी दौरान अचानक से आप ये अच्छा चलो यहां पे करो कि उसी कंपनी से मतलब इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड। वो बेसिकली वो मुझे लगता है वो खसोटने लगे हुए हैं कि कैसे आपको कुछ मिल जाए। तो जब ये must have been crisis in 2019 when the party was looking for a new president, right? You are aware of what's been happening in Maharashtra for the last 4 years. Who joined hands with the Shiv Sena? That's a separate issue. Inside the party is how it's entitled to become. It's very painful to I heard that statement of the leader saying that ये सारी चीजें मैंने अपनी किसी को फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी से हूं, सोनिया जी और मैं एमपी 2019 के चुनाव फॉर द नॉमिनेशन एंड देन फॉरगेट अबाउट लाइब्रेरी फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। We were even told to take photos and like tweet it or in the Facebook. अगर आप अपने मंदिर में वो हवन करके I'll show you and I'll show you the photos also. I still have them. I don't need it. I'm not हमारी अपनी पारिवारिक जो भी दिक्कतें समस्याएं हैं lot at all. But the irony is कि जिसके नाम की खाते हैं आप सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को जो आप गाली बोलते हैं उसको बंद करना चाहिए। वेल्थ क्रिएटर्स कोई पाप नहीं करते, अपनी मेहनत पोजीशन में बैठे हैं, तो अगर वो इस प्रकार से बैठेंगे तो लोग चलिए सोशल मीडिया तो कहने लगे, let's not go into that. मैं उनको when no, I'm not going to that. No, we will go into that. But before that, just one comment. How can this country not elect my family to power and elect this man to president? Priyanka was in the wrong. No, I have to say she did give me the time of the people and then obviously they will elect Rahul Gandhi. So it has to be a transparent elected election. फिर आप बोलेंगे कि तुम मुस्लिम हो इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। इस दिशा में स्टेप्स हैं। सर मेरा नाम जावेद है, मैं आपको सवाल करता हूं कि आपको मीडिया जिस तरह से दिखाते हैं पोस्टर की तरफ से और आपको एक एंटी मुस्लिम जैसा दिखाते हैं पूरी नेशनल मीडिया में, लेकिन मैं भी असम से हूं और आप असम के मुसलमानों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं मैं खुद मुसलमानों को भी पसंद करता हूं, लेकिन ये जो आपको मीडिया में दिखाते हैं कि आप एक पूरा एंटी मुस्लिम है, तो इस तरह से दिखा के जो गैप बनाते हैं मुसलमान और आपके बीच में, तो आप असम के पूरे मुसलमानों को वो गैप कैसे कम करेंगे? देखिए जो बेटा बोल रहा है, ठीक ही बोल रहा है। हमारा जो काम है, मैंने बोला मदरसा बंद करो और आप उसका जगह में लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाओ। फ्रॉम दिल्ली इट लुक्स लाइक ए स्टेटमेंट, लेकिन आपको जान के यू विल बी वेरी हैप्पी। अभी हमारा असम में मेडिकल कॉलेज में एवरी ईयर 300 to 350 मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स गॉट एडमिशन। हमने हर जगह में हर जिले में कॉलेज बनाया, सुविधा बढ़ाया, और असम में जो मैं कर रहा हूं उससे मुसलमान समाज का बहुत दूरगामी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। फिलहाल मैं सबको बोला हूं कि मुझको वोट का कोई लालच नहीं है, और आप लोगों को एक चीफ मिनिस्टर मिला है जो बिना वोट का लालच आपके लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारा 1 लाख सरकारी नौकरी हुआ असम में, 7-8 हजार मुसलमान बेटा बेटियों को नौकरी मिला, लेकिन हमारा यहाँ में समाज व्यवस्था ऐसा था कि बिना पैसा किसी को नौकरी नहीं मिलता था। पहला बार हिंदू को भी बिना पैसा नौकरी मिल रहा है, मुसलमान को भी बिना पैसा नौकरी मिल रहा है। पीपल आर गेटिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो इसीलिए मैं असम का हर मुसलमान इलाके में जाता हूँ, मुझको तो ठीक ठाक सब लोग रिसेप्शन करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मेरा असम में कोई इशू नहीं है। मामा बुलाते हैं, दादा बुलाता है भी मामा में सबका, तो दादा भी हूँ। सो ये तो हमारा प्यार का रिश्ता सला हुआ है, चलता रहेगा। लेकिन असम में मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझको कोई मुसलमान एंटी मुस्लिम सोचता ही नहीं। धुबरी का चुनाव जीतना क्यों नहीं चाहते? देखिए धुबरी का चुनाव इज अ प्रॉब्लम। मैं अगर बोलो कि जितना चाहता हूँ लेकिन मैं जीत पाऊंगा, तो मैंने पॉलिटिक्स सीखा हूं, which is real, which is practical। मैंने बोला हूं कि अभी धुबरी में चुनाव जीतने का मेरा सिचुएशन नहीं है, तो why should I put my resource there? यानी कि प्रैक्टिकलिटी ये है कि मुसलमानों को बाकी वोट नहीं चाहिए। देखिए असम में 3 मुसलमान लोगों का सीट है, where मुसलमान are in majority, नौगांव, करीमगंज, धुबरी। I am saying that I have a chance of winning in नौगांव and करीमगंज, but not in धुबरी। क्यों छोड़ रहे हैं? थोड़ा चाहिए ना, सब में दोस्ती बना रहना चाहिए। कांग्रेस से भी, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है राहुल गांधी से फिर दोस्ती क्यों नहीं कर रहे? ब्लू ब्लड वाला से मैं दूर रहता हूं। मेरा एक सिस्टम है, पिछले हमारा रहन बहन खाना उना सिस्टम थोड़ा सा मेरा अलग है, मैं ब्लू ब्लड वाला से नहीं सकता हूं। क्यों? वो लोग क्या कल्चरल प्रॉब्लम है, कल्चरल प्रॉब्लम। क्या कल्चरल प्रॉब्लम है? समझाइए तो। देखिए जो लोग सेल्फ मेड है उनसे बात करने का एक अलग अंदाज होता है। आपको जैसे यू आर ए सेल्फ मेड जर्नलिस्ट, तो आपका साथ में जब बात करता हूं आई टॉक विद रिस्पेक्ट, ये सेल्फ मेड है। अगर आपका बेटा आपका ही कुर्सी में बिकॉज ही इज योर सन बैठ लेता है, तो मुझको हर बार आपका याद आते रहेगा। जब भी मैं वो मुझको क्वेश्चन करेगा, मेरा याद उनका नहीं आएगा, मेरा याद नबी का दिखा है। राहुल गांधी को देख के किसका याद आता है? पूरा गांधी का आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, किसका याद आता है? कंफ्यूज हो जाते हो मैं किसका साथ बात कर रहा हूं। तो उनका कुछ कॉमनैलिटी लगता है राहुल गांधी में, छवि दिखती है उनकी। मैं आई थिंक मैंने बाकी गांधी से बात करने का मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी में कॉमनैलिटी बहुत कम है, ये मैं बोल सकता हूँ। बहुत कम है, ना की बराबर है। क्यों? सोनिया गांधी जब पार्टी चलाया, कम से कम उनका एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसका एडवाइस लेकर और सोच समझ के पार्टी चलाया। लेकिन राहुल का पार्टी चलाने का जो सिस्टम है, आपने जो डिक्टेटरशिप का बात बोला है, जो भी आप बोलते हैं, और एवरीथिंग फिट ऑन टू हिम। वो डिक्टेटर है, वो कुछ मतलब उनका अंदाज और मूड ही अलग है। कोई लोग बराबर लोग उनका पास जाने के लिए डरता है। हम बोला भाई क्या है, चला जाओ, बात पूछ के आओ। बोलते नहीं संभव नहीं है, इनका मूड क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम जब अमित शाह का घर का अंदर जाते हैं या मोदी जी का पास रहता हूं, हम तो उनका मूड का हमें अंदाजा नहीं लेना है, मूड हमेशा खुश रहेगा, मालूम है। लेकिन इनको लोग, कांग्रेस का लोग भी जाते हैं, मूड का एक पैरामीटर ढूंढते कि ये पैरामीटर ठीक है, भी जाना जा सकते हो। और राहुल गांधी जब कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और हमारी लड़ाई उस शक्ति से है, तो बाद में क्लैरिफाई करते हैं कि असुरी शक्ति। देखिए वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम? देखिए शक्ति को आप असुर से क्वालिफाई मत कीजिए, गलत बात ये भी बोल रहे हैं। हमारा हिंदू धर्म में शक्ति हमेशा मां कामाख्या ही होता है।
शक्ति माँ का प्रतीक होता है। शक्ति में कोई असुरा शक्ति नहीं होता है। शक्ति इज शक्ति, शक्ति इज ए पॉजिटिव कॉन्नोटेशन। अभी तो असुरा शक्ति बोल के फिर वो जब पहले गुनाह किया था अभी आप दूसरा गुनाह कर रहे हैं ना। माँ इज माँ, दैट माँ कैनॉट बी ए नेगेटिव माँ। तो हमारा हिंदू धर्म में शक्ति इज ए पॉजिटिव वर्ड। शक्ति सिंबलाइज मदरहुड, शक्ति सिंबलाइज क्रिएशन, शक्ति सिंबलाइज योर कंटिन्यूटी, वाइटलिटी। तो उसमें आप असुरा लगा के इसको आप नेगेटिव वर्ड नहीं बना सकते। जैसे माँ का सामने कुछ भी लगा के आप कभी भी माँ को नेगेटिव नहीं बना सकते। There's no way they'll call and be like क्या हो गया, like so just this morning एक मेरा बहुत पुराना कार्यकर्ता है, you know, मेरे grandfather के ज़माने से, our families have been together and somehow he's mad at me and younger than me, छोटा भाई है, you know, and then I called him, I've been calling him for the last 2 days, like क्यों गुस्सा हो, क्या हो गया, घर के बच्चे हो, you do that, you know, I could very easily be on a high horse and be like मैं विधायक हूँ, होगा कुछ नहीं होता दूसरा, no, you just don't do that to people, right? They did get their cronies to call me and sort of some MLAs and all of that कि प्रियंका जी बहुत नाराज हैं and all that because I think there was a whip. So the idea is कि वो नाराज हैं तो आप फोन कीजिए. हाँ है ना कि वो बड़ा नाराज है और आपने whip का उल्लंघन किया this and that. And I remember, gosh, it's been a few years, but I think there was this 2-day non-stop session happening in the Vidhan Sabha. Something to do with I think it was Gandhi ji's 2nd October था, like some Jayanti, it was a special Jayanti, like marking so many years or something. And so to celebrate that, UP Vidhan Sabha had like a special session for 2 days non-stop, only to talk about Vikas and development. It wasn't a political, it wasn't like a opposition and you know, it was just like everyone putting their views about, you know, development and all these different agendas that we had. And they for whatever reason Congress party ने whip जारी किया कि none of our MLAs are going to go for this. And I think why I want to go, I want to speak on this. किसी पार्टी का कुछ वो political था ही नहीं. It was just me talking about Gandhi ji and how far we've come and you know, the state of the nation and development and completely like a very apolitical and kosher agenda. So I said, what can be the problem with that? You know, so I went ahead and spoke. I wanted to, I prepared for days. I wanted to do my bit. And that's when it started. Whip का उल्लंघन and so then they got the people to call me कि आपने क्यों किया ये? मैंने कहा मैंने कुछ बोला, आप सुन लीजिए मेरी speech, you know. And पर whip थी तो इसमें आपने फिर क्यों whip लगाई? There was just nothing, you know. ऊपर से this is about Gandhi ji. This is about the father of the nation, you know. This is not a political agenda Vidhan Sabha, you know, as per usual at all. So the irony is कि जिसके नाम की खाते हैं उनके सम्मान में एक विधानसभा के सत्र में जाने के लिए whip जारी मत जाओ. मैंने exactly ये point कहा है. How can you do this if this is any other? पिताजी आप किस बहकावे में हैं? कोई राजा रंग को फोन करता है. आप सुनिए इनके 15 सीएम निकल गए. गुलाम नबी आजाद, अमरिंदर सिंह, इनको फोन जब नहीं गया तो आदित्य और मेरे जैसे लोगों को कहां से फोन आने वाला है पिताजी? उनको फोन कर लेते हैं, वो 15 सीएम निकल गए उनके. अशोक चव्हाण, नारायण राणे, अमरिंदर सिंह, किरण कुमार रेड्डी, पेमा खांडू, दिगंबर कामत, रवि नायक, एसएम कृष्णा, विजय बहुगुणा, एनडी तिवारी, जगदम्बिका पाल, ये सब they all have CMs, only CMs. MPs की नहीं. So there is Maharashtra, Punjab CM, undivided Andhra, Arunachal Pradesh, Goa again, अच्छा हमें छोड़ दीजिए. कर्नाटका, उत्तराखंड. अरे इसमें वो नहीं है, हेमंता नहीं है, हेमंता भी तो निकले थे. हेमंता पर सीएम नहीं बने थे उस समय हमने बीजेपी ने उनको That's why his name is not on this. मेरा ये कहना है कि वो जिनके साथ उनकी मित्रता, घनिष्ठ मित्रता थी, जैसे ज्योतिरादित्य जी या मिलिंद जी, उनको उन्होंने कम से कम फोन करके कुछ बोला हो तो. Before it happened, but एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था, you know, when he was asked that how come you don't, you know, does the Gandhi family call you? Why are they not there? And things. To which he turned around saying कि वो राजा है, हम रंक है. मैंने वही कहा. So exactly. So this is what he said, that they decide. You know, the pecking order is such that it's the Raja who decides that when is the interaction going to happen. Yeah. And this is something that Rashid Kidwai also said, that you know, when it comes to that, there is a special place that the Gandhis have, and people go to the Gandhis when the Gandhis call them. You don't visit them because you have a grouse. Yeah. But tell me, you were there in Raebareli, right? And why did you accept or do you think that there's no other way? कि Priyanka Gandhi. Priyanka is nobody in the party, right? Officially at that time. Yeah. But you just accepted it, right? That it's Priyanka who will decide. It's she who I have to talk to. Yeah. Rahul Gandhi was the president of the party at that time. Yeah. Sonia Gandhi was your MP at that time. Yeah. But in spite of that, it was Priyanka Gandhi who was taking decision. Absolutely, especially for the constituency. I did eventually meet Rahul Gandhi. I just found him, I'm sorry, but completely unimpressive. I didn't know what to. So I would talk to him about work or UP. I remember like the first time. 3 months back. From that day, I tried my best, Rajdeep ji. And second thing, Rajdeep ji, you can't abuse every wealth creator of the country. If Air India is purchased by any particular group, Congress party is against that. I tried not to criticize that, but Congress party, all leaders have criticized that. Why? Are you All against crony wealth capitalism? creators are wrong, Rajdeep ji. Are you against? No, but are you against crony capitalism? Rahul Gandhi claims he's against crony capitalism, not against capitalism. Indirectly, what is happening? That every day Congress party is criticizing the wealth creators. Now I don't want to name 1 or 2, but there are 10 people I can name. Air India, who had purchased Rajdeep ji, you are aware of. I had Congress party not issued press release against that. I tried to stop them. That every disinvestment is not wrong. Privatization, globalization, liberalization is Congress policy. Why you are making statements against Congress's own policy? What is happening? You became MPs because your fathers were in politics. The party's given you a lot. You've been a candidate twice. Apart from the 2 times you won, you've also in 2014-19 been the candidate from Mumbai. You are Mumbai Congress chief. You're even today you are the joint treasurer of the party. They will say, what has the party not given to the Deora family? You're being ungrateful and entitled. How do you respond? So yes, the party gave me what it gave me because I come from a political family. I appreciate that. But if the party has given me something, have I not given back to the party? Shall I count what I have given? There's something which I can't say on public television which I've done for the party. But the party knows that I've given back. At the very least, which everyone knows in public, I give 10 years. I give 10 years of loyalty to the party, hoping, against hope, that the party will change. The party will move towards a more constructive agenda. That if one senior leader leaves, the party will feel there is a problem. It can't be, if one leader has left, you can call it an aberration. You can say one leader was selfish, one leader had compulsions and had to leave. If several leaders have left, if several leaders have tried to leave, surely there's something wrong. Surely there's time for introspection. Surely there's something going wrong in the party. Can I give you the example? The best example is this morning. One of the senior most leaders of the party, Mike, sending me a message. I understand you had to leave, but couldn't you have chosen a better day? Can you imagine? Fine, don't call it entitlement. Is that not arrogant? Is that not foolish? Is that the way in your company? Can I put the second question to you? Is that the way the resources department CEO, I a senior anchor? Okay, I take
your point, but may I ask you the second question, which is you say you've sacrificed the last 10 years, the best years of your life, working for the party. There will be those who will say that you were actually hankering for position, that you wanted a Rajya Sabha MPship which was denied to you on more than one occasion from Maharashtra. You've lost 2 consecutive elections, therefore you couldn't have the right to contest from South Mumbai in 2024. The Shiv Sena defeated you there. They have Arvind Sawant contesting. Milind Deora is doing this for position. Eknath Shinde is offering you a Rajya Sabha seat. That's why you've chosen to go with Mr. Eknath Shinde, even though the Shiv Sena is a party that your father, Murli Deora, was seen as an opponent of. My father had very old relations with the Shiv Sena, Rajdeep. You know Mumbai's politics better than that. That's a separate issue. If I'm asking for a position, let's say that what you're saying is true. Some will say, as you say. What's wrong in that? What's wrong in asking for a position to be able to serve the people better? The kinds of people who've been sent by the party, let's say, are they better than me? Are they more capable than me to raise the issues of Mumbai and Maharashtra in the Parliament of India? Are they better equipped to represent the people of the city? Do they have the connect? Do they have the grassroots network that I have, which can help the party? What is wrong in that? Politics is a game of acquiring power to be able to deliver justice. That is the objective of politics. That is the meaning, the dictionary definition of politics. If you do not have power and the party wants to keep you away from power, what is wrong? If tomorrow a man comes along and says, I need you, I want you to come and work with me. I believe you have what it takes to help me make Mumbai a developed city again, to make Mumbai strengthen Mumbai's position as India's financial capital, to attract investment to Maharashtra. What's wrong with that? That's what I entered politics for. I'm not ashamed of that. I entered politics to deliver and to work. How if tomorrow, Rajdeep, someone tells you, you work for the channel, go on TV every day, I won't pay you, I won't call you the editor, and someone else is saying, no, Rajdeep, I value you, I think you have a network, you have a following, please come to my channel, won't you think about it? What's wrong with that? It's not called being selfish. It's called being able to acquire power to deliver justice for the people. And if there's someone better than me, of course I'm willing to accept that. But what happens repeatedly is if someone feels, people with lesser abilities, largely people who unfortunately are sycophants, are not willing to say the truth, are people who don't want to offer constructive suggestions but are yes people. If they are rewarded, and the ones who are offering constructive suggestions and are real loyalists of an organization are being punished, there comes a breaking point. And that's what's happened. I never thought it would happen. If you asked me 1 month ago, can you ever leave Congress? I would say no. If you ask me, do you think there are problems in the Congress? I would say there are 100 problems in the Congress. But I could never think of leaving Congress. But there comes a tipping point in somebody's life. And at that point, somebody has to ask themselves, as I said, what is your purpose? Is your purpose to serve the people, or is your purpose to be a psychopath? And I chose the former. My community also very less involvement in politics as such. We are a business community, most of the people. And therefore, for a person like me, when I was in school, 15, 16, I was very influenced by what I read in textbooks about the contribution of Congress party towards the freedom struggle, etc. And I was very influenced by that. And I used to come to Delhi. Every 6 months, I would save my pocket money. And then I would take one room in Arjun Nagar, which is a slightly cheaper area to live in. I would take the 610 Blue Line bus. And from there, it used to be a 10 rupee ticket. I used to go to the Janpat Road station, bus stop. And from there, I used to walk to Chaubis Akbar Road. And you know who used to drop me back? Tom Vadakkanji. He was the secretary of the AICC media department for the longest time. Tom ji will also confirm this. So, Akbar Road being the Congress headquarters. Now, I started off from there, and the idea was to be part of a party to serve the nation through the instrument of the party. But over a period of time, I figured that the practical experience was that the Parivar was the party. In BJP, the party is the Parivar. Here, the Parivar had become the party. And either you have to accept and do everything that the Parivar says, you have to not seek any accountability from them, you have to say that it is only Parivar, not performance that will matter, you have to give merit a byway, and that's the only way you can survive, through sycophancy. But did you know that, Shehzad? Everybody knew that, right? Everybody who joined the Congress party, who was born into the Congress party, knew that it is a Gandhi family party. In our families also, we all know that something is not right. We don't leave our families the first moment. We try to improve the things inside the family. We try to improve the things inside our business. We don't leave any system or organization or our association in the first go. We know that there are some faults. We hope that it will change. Rahulji, when he came in 2004, and then he subsequently became General Secretary, I think in 2009, in charge of Youth Congress and NSUI, he had promised us. You were already in the Congress. I was in the Congress. I was in NSUI, then I was in the Congress. I was one of the youngest office bearers of NSUI. I was vice president of the Pune city wing also. What was your first meeting with Rahul Gandhi like? The first meeting was during the time when he was trying to revolutionize the Indian Youth Congress. He had taken that up as an assignment. And at that time, he had told us that, look, I am going to give entry to people who have no family backgrounds. You don't need to have money power to be a part of the system. It's going to be a completely transparent elected system. That's what he had assured us. We obviously gave him time to put that system in place. But by the end of it, the Youth Congress became more dominated by Namdars. So every state president was either the son or daughter of some politician or some neta. And the entire system had become more oriented towards having papas or mummies, friends, sons and daughters. So was he not in control of who's going to... No, he was absolutely in control. He was absolutely in control, and this is the problem. I feel after my various interactions with Rahul and people around him that he prefers to have people who have been friends with his father or who have been friends with his family in positions around him and positions of power. He's, for the lack of a better word, he's very entitled in his thinking and he's very elitist. I'll give you an example. I was, I think, second or third who left after Hemanta ji. The manner in which he treated Hemanta. Because Hemanta ji does not have, like me, he did not have a family background in politics. Hemanta ji is a self-made man. As opposed to Gaurav Gogoi, whom Rahul will have a different respect for because Tarun ji and Rajiv ji or Tarun ji and Sonia ji are close. So he has a different orientation. Even if you see people around him, they are sons and daughters of somebody whom he relies on. And therefore, I think he has actually got a sense of entitlement and a sense of arrogance that I come from a particular lineage, pedigree. These people also have a similar pedigree to me. You people are not in the same pedigree. So I can bestow something upon you, but he doesn't really mean it. And therefore, after spending a lot of time, 2017, cutting short the story, in 2017, my only request was when they were trying to coronate him, and I use this word very consciously, they were going to coronate him as the president. I told the party, confidentially, within the party platform, that look, there should be an election, it should be a free and fair election, it should be an election as mandated by the Congress constitution, which means that the delegates also have to be elected. It can't just be that, you know, the delegates are selected by Sonia ji's people, and then obviously they will elect Rahul Gandhi. So it has to be a transparent elected election, which didn't happen even in Kharge ji's case. Shashi Tharoor ji says that there were a lot of things left to be desired. So instead of having an election, they had a coronation, and that's when I said that, look, this party is unwilling to put in place principles it advocates elsewhere. It says Loktantra in the entire country, but अपने आप को लोकतंत्र मुक्त करके रखा है. मतलब this is the irony. They want लोकतंत्र in the country. They say मोदी जी लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, but अपनी पार्टी में लोकतंत्र नहीं चाहिए. Let me just give you one example. From 1978 to 2022, that is 44 years, one family has been at the helm of affairs of Congress. Sonia ji, Rahul ji, Indira ji,
Rajiv ji for 38 years, 38, 39 years, except for 2-3 years of Narasimha Rao ji and 2 years of Sitaram Kesi, and we all know what they did to Sitaram Kesi. In the same 38-40 year period of 1982, 2022-23, you have the BJP, which has had Vajpayee ji, Advani ji, Gadkari ji, Rajnath ji, Janak Krishnamurti ji, Bangaru Lakshman ji, Nadda ji, Amit Shah ji. These are at least 10 presidents. And therefore, the Congress party... But when you got into the Congress, this was already something that everybody knew and you also knew. Of course I knew. Right? So it wasn't as if these are two options open and... Well, I was gullible to believe Rahul Gandhi. I was gullible that we gave him 5-7 years to put in place things that he promised, but he did not deliver, and he doesn't deliver. And apart from that, apart from not delivering... Who brought you into the Congress? I'm asking you this because... I'll tell you how I entered politics. I used to read about contributions of one family because the textbooks were also written in such a way that only one family was highlighted as the Karta Dharta of the entire Azadi Ka Andolan. Yeah. So you feel that this one family and Congress party as an instrument has done everything for Azadi. Now, having read that, you feel inspired, and then I started doing student activism in college, in university. Which is where? Which is in Pune. I studied, brought up in Pune all my life. And when I finished my graduation in Pune, I started joining the NSUI activities. I had also been, doing work for the NSUI. I thought that I should contribute more. So that's where I used to save up my pocket money, come to Delhi, work in the media department, and people appreciated my work at that time. Digvijay Singh ji, Tom Vadakkan ji, and others who were in the Congress party, they appreciated my work. They even thought that I should be the spokesperson of the party. Let me tell you this also. The Congress party in 2012-13 had a special trial for who should be spokespersons. And I was the best there as well. Some reports had also been published that there was an entire meritocratic system that was put in place to decide that on which aspects of spokesperson should be selected. Content, knowledge, body language, tone, tonality, how to speak, present. Despite me doing the best on that, Mr. Surjewala, lo and behold, his father was obviously in the Congress, and Ajay Makan, they were selected, and my name was chopped off. So that's the level to which anybody who has merit, who has performance, but not parivar, is sidelined within the Congress. Was that the last straw? That was not the last straw. The last straw for me was in 2017, when after several attempts to try and get the Congress to course correct, I had also told Congress leaders that if we want to, I was in the Congress then, so I was saying if we want to at least get 100 seats against Prime Minister Modi, okay, because Modi was declared as the candidate, we must get rid of two people completely, Rahul and Robert. And I think that was the last straw from their side, that ab ye nahi sahan ho payega. So this is the thing that culminated in me leaving the Congress, because ultimately the Congress was unwilling to change its system to a more democratic system, to a more performance-oriented meritocratic system, and it was unwilling to define what its ideological positions should be on issues. I am a proud Muslim, but I don't think that we should be talking about eliminating Hinduism. We should not be talking about Ram ji ka astitva hai ya nahi hai. And therefore I used to tell them that on these issues, let's have a strong position where we can't be questioned as as being appeasers of a particular vote bank. They were unwilling to do that as well. And in the subsequent years, they have tried to course correct, but they have not done it genuinely. And therefore the Congress party continues to be in the mess that it politics as much, because they try to emulate it, they try to play the soft Hindutva card themselves. The real problem with Modi is that Modi comes from no political background. Congress कार्यकर्ता, they had more attitude than the Gandhi family themselves. In the House of 403 MLAs, you have 7 MLAs, 7, and that too after a Gathbandhan with Samajwadi. And people used to make fun of us, जब हम पहली बार विधायक बने थे कि अरे तुम कांग्रेस वाले तो इनोवा में चले जाया करो ना. नहीं, पर अब इनोवा से रिक्शा की स्थिति में आ चुके हैं. नहीं स्कूटर दो हैं, अब दो विधायक. कोई राजा रंग को फोन करता है. अब सुनिए इनके 15 सीएम निकल गए. इनको फोन जब नहीं गया तो आदित्य और मेरे जैसे लोगों को कहां से फोन आने वाला है. ताऊ उम्र कांग्रेस यही गलती करती रही. धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती. What rather surprised me, perhaps I didn't realize it upon the time of joining the Congress party, is how much of a quote-unquote anti-Hindu stance a lot of times they would take. अगर मुझे कल मोदी जी या नड्डा जी बोलेंगे कि तुम मुस्लिम हो इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं बना रहे हैं तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा. If they make me only because I'm Muslim, then I will say कि सर ये तो कांग्रेस भी करती थी. मांगा मुसलमान दिया सलमान. The Congress party and the Communist party were the only ones जिन्होंने स्पष्टता मना कर दिया. Other people at least they had the suhoor to be like देखिए हम क्योंकि सब परिवार आना चाहते हैं तो हम बाद में जाएंगे. I am a proud Muslim, but I don't think that we should be talking about eliminating Hinduism. We should not be talking about राम जी का अस्तित्व है या नहीं है. Minority की परिभाषा मुस्लिम नहीं है सर. Minority में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं. The largest minority are Muslims. मैं तो देखता हूँ कि second largest majority है हम. Priyanka Gandhi says to my ex-husband, you talk smack about her, चरित्र पर, ठीक है ना, about how she is and this and that, and I'll give you a ticket. ईशान को बोला 10 किलो घटा के तो राहुल जी से मिलने मिलेगा. बताइए बेचारा वो ईशान बोल रहा है कि he said it है उन्हीं. It just gives you a sense of how entitled the party is and how it's entitled it's become. It really pains me to I heard that statement of a leader saying that the party is effectively saying couldn't you have chosen a better day? The latest being about what the Prime Minister should have When you done. both were in the Congress, at that time, the politics was not as bitter as it's now. That's what I think. Rahul Gandhi and Priyanka did not make these kind of vicious Smita ji, comments against Modi. I remember it being against Smriti, but not so much against स्मिता जी ये दुष्प्रचार और भ्रम है कि 2014 के बाद हमारी पॉलिटिक्स इतनी आक्रामक हुई है. प्लीज टेल मी हु गॉट अप एंड कॉल्ड वाजपेयी जी. इतने सौम्य व्यक्ति को गद्दार किसने बोला था पार्लियामेंट में? वाजपेयी जी को गद्दार बोला गया पार्लियामेंट में. ये तब तो बीजेपी कहीं नहीं थी ना. Yeah, when we were around Also, Smita ji, in the 2019 Congress campaign, the slogan, like the unofficial, Vodka Saudagar also was very चौकीदार चोर है. political. Who can forget that? Yeah. बसों से चिल्लाना, That's what I'm रैली saying में that- चिल्लाना, चौकीदार चोर है. So no, what I was saying That was was that, 19. that these kind of comments used to be said by the Congress, yes, but one never saw the Gandhi family dirtying their hands or using slurs in their conversations. It was somehow कि इनको keep them away from the इनको महफूज रखो. हाँ, And, don't get them yeah. dirty, their hands dirty. But Vodka Saudagar changed It it. relates to what I have been saying, that Rahul ji and his family think that they are entitled, that this country owes them everything. That's why they keep invoking also कि मेरी दादी शहीद हुई, मेरे पिताजी शहीद हुए. They think that it is the country's duty now, because of the past contributions, alleged or otherwise, that we have to now make Rahul Gandhi the Prime Minister, or else Rahul Gandhi is entitled to judge the wisdom of 140 crore Indians which have chosen a chaiwala as the Prime Minister. They don't. You know what the problem with Modi is? The biggest problem. No, the biggest problem with Modi. Look, they don't have a problem with Modi's or BJP's Hindutva politics as much, because they try to emulate it. They try to play the soft Hindutva card themselves. The real problem with Modi is that Modi comes from no political background. That scares them. They cannot fathom that how can this country not elect my family to power and elect this man who used to sell tea at a Vadnagar ka railway But you know, station. like That is the problem. Shehzad, let me come to Aditi. This thing of them
them, the Gandhi family or the Congress party not being able to accept people who are not to the manner born. But Uttar Pradesh mein Gathbandhan is with Mulayam Singh Yadav, who doesn't come from some kind of an elitist background. How come that is acceptable to them? They also made Sitaram Kesri, yes, granted what happened to him later, but there have been so many people in the Congress party considered close to Sonia Gandhi, Rajiv Gandhi, all of them who were not from very elitist background. When did that change? That's exactly like what Shahzad said, is as long as you're a sycophant, ठीक है, आप नहीं होंगे राजनीतिक परिवार से. But Mulayam Singh ji are sycophant. They need Mulayam Singh. What did Smriti Irani just say right now in America? I don't know if you guys saw that or not. I think it was like a few days ago in an interview. Ki stop using Samajwadi Party as a crutch. दम है तो अकेले. And I would say this as a Red Lily वाला also. दम है तो अकेले लड़िए. They need Samajwadi Party more than Samajwadi Party needs them. Imagine like in the Gathbandhan they're getting 13 seats, including Raebareli and Amethi. The GOP reduced to 13 seats in Uttar Pradesh. They have one Lok Sabha. They won one Lok Sabha in a house of 80 seats in a state that gives जहाँ से 80 सांसद हम भेजते हैं संसद में. In a house of 403 MLAs have 2 MLAs. उनमें से एक तो मुझे accidentally स्मिता जी, मजबूरी में तो इंसान, वो अभी कहावत है तो उसको डायरेक्टली कोट अनकोट ना कीजिए, गधे को भी बाप बनता है. दूसरी बात, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, वरना वो कट हो जाएगी. दूसरी बात, आप क्या कह रही हैं? इनका गठबंधन जो इंडी, ये इंडी गठबंधन पारिवारिक दलों का अलायंस है. पीडीए का मतलब पारिवारिक दलों का अलायंस. आप सोचिए ना, मुलायम परिवार, लालू परिवार, शरद परिवार, स्टालिन परिवार, सोनिया परिवार, यही तो इंडी गठबंधन है. इसके अलावा क्या है इंडी गठबंधन? I get what you're saying. 7 परिवारों का गठबंधन है. और भारत पर संजय निरुपम जी, या तो होगा मेरा नाम नाविका कुमार है. कम से कम 25 साल से तो हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन साथ बैठने में मनाही थी. आज क्या कहेंगे? नहीं, आप नाविका जी, आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. और ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल कंपल्शन होते हैं, शायद आपको कंपल्शन नहीं है, इसलिए मैं आपको क्या नहीं. संजय निरुपम जी, आज आपने कांग्रेस से इस्तीफा आपने दिया या उन्होंने आपको निकाला, इस बात पर बहुत चर्चा हो रही है. पहले तो ये बता दीजिए, इस्तीफा था या आपको पार्टी से निकाला गया? मैंने कल शाम को, कल जब दोपहर में मुंबई में ऐसी चर्चा उठी कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, इसके पहले 2 दिन पहले मैंने बोल दिया था कि एक हफ्ते के बाद मैं अपना फैसला सुना दूंगा, जिसका जो मियाद है वो आज पूरा हो रहा था. और मैंने मीडिया के लोगों को बोल दिया था कि आप लोग आइएगा और 11:30 बजे फर्स्ट करेंगे. यानी कल, यानी बुधवार को ऐसी चर्चा उठी कि कोई एक्शन लेने वाले हैं. तो मैंने कल ही ट्वीट कर दिया था कि अपनी ऊर्जा और स्टेशनरी मेरे ऊपर बर्बाद मत करिए, मैं वैसे भी फैसला कर रहा हूं और कल मैं जो करना है अनाउंस कर दूंगा. फिर भी मैंने अपना इस्तीफा पत्र तैयार रखा था. मैंने लेट नाइट कोई 10:40 पर भेजा था और उसके बाद मुझे तत्काल पता चला कि लोगों ने मुझे निकाल दिया. मैंने कहा ठीक है, मुझे निकाला क्यों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है. आज जो मैं कह रहा हूं उसकी वजह से निकाला जा सकता है. मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूं जो पता नहीं होगा, लेकिन कल तक मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से शिवसेना के सामने सरेंडर हो गई. कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे कामकाज को शिवसेना के हवाले आउटसोर्स कर दिया. और शिवसेना जो खुद एक बिखरी हुई पार्टी है, जिसका जनाधार पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में है, स्प्लिट हो गया, एक मतलब एक वर्टिकल स्प्लिट हुआ है पार्टी में. ऐसी पार्टी, मतलब जो जिसको यूपीटी शिवसेना कहते हैं, ऐसी पार्टी के भरोसे कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा रिस्क ले. और जिस तरीके से यूपीटी के लोगों ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर और कांग्रेस के सीट शेयरिंग मीटिंगों में हमारे ऊपर जिस तरह से डोमिनेट किया, वो भी मुझे गलत लग रहा था. और आखिर में उसका नतीजा आया कि मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना ने अपने पास ले ली. मैंने कहा यह कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का एक षड्यंत्र है. इससे कांग्रेस पार्टी खत्म होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा आएगी और हमारे जैसे लोगों का भविष्य भी खराब हो जाएगा. तब मैंने एक अपील की थी कि इस बारे में आप कुछ ना कुछ सही फैसला लीजिए और शिवसेना को इतना लिवरेज मत दीजिए, वरना कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए यहाँ से हद पार हो जाएगी. अब ये एक सच है पार्टी के हित में, पार्टी को बचाने के लिए. लेकिन ये सच इतना कड़वा लगा कि सच को सुनने समझने और उसका विश्लेषण करने के बजाय उन्होंने मुझे सजा दी. तो मैं पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने के मन में जो है कि उन्होंने मुझे निकाला और एक्शन लिया और उससे उनको एक आत्मसंतोष मिलेगा और उनके अभिमान को, उनके अहंकार को तुष्टि मिलेगी, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं उन्होंने मुझे निकाल दिया. संजय निरुपम जी, आपने बड़ी बात कही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में. आपने कहा कांग्रेस में 5 पावर सेंटर्स हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल. आपकी इनमें से किसी से बात हुई पार्टी में जब आप अपना एडवाइस दे रहे थे? ऊपर के 3 लोग तो मिलते जुलते ही नहीं और नीचे के जो 2 लोग हैं उसमें अध्यक्ष तो मिलते हैं लेकिन वो बोलते ही नहीं. और एकदम आखिरी नंबर पे है वो सिलेक्टेड लोगों से मिलते हैं जो उनके काम सही. बाकी मिलेंगे भी तो वो क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता. उनकी हिंदी ऐसी होती है जो हम समझ नहीं सकते, अंग्रेजी भी ऐसी होती है जो आधा हिंदुस्तान और आधे कांग्रेसी नहीं समझ पाते, और जो मलयाली बोलेंगे वो हमको समझ में नहीं आता. तो एक बड़ा एक संवादहीनता की स्थिति है कांग्रेस पार्टी में, एक मेजर कम्युनिकेशन गैप है. और वो सिर्फ इसको मैं नहीं महसूस कर रहा हूं, इस समय हिंदुस्तान के कई राज्यों में काम करने वाले मेरे जैसे जमीन पर लड़ने वाले लोग उस कम्युनिकेशन गैप को, संवादहीनता को महसूस कर रहे हैं. तो इन्होंने अपनी लॉबी तो बना ली है, अपना कॉकस तैयार कर लिया है, अपने दरबारी तैयार कर लिए हैं, लेकिन वो सब अपने नेताओं के फायदे के लिए, और उसमें उनके बीच टकराव भी होते हैं. और गली को तलवार नहीं चलाते, लेकिन समझ लीजिए को तलवार चलाने जैसा ही संघर्ष चल रहा है. और उस संघर्ष की वजह से, उनके अपने द्वंद्व की वजह से, उनके झगड़े की वजह से कई बार मेरे जैसे निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं. और इसमें कई लोग परेशान हैं इस समय कांग्रेस पार्टी में. और आने वाले दिनों में आपको इसके नतीजे अभी और दिखेंगे. तो ये मोटा मोटी तौर पर मेरा अनुभव है पिछले कुछ वर्षों में. पहले ऐसा नहीं था. सोनिया के जमाने में एक ही पावर सेंटर था, वो ठीक ठाक था. राहुल जी बने कुछ ठीक ठाक था. उसके बाद आज जो 2019 के बाद जो कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर बना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. आज कांग्रेस पार्टी जिसमें और भी कमजोर हो रही है, बिखर रही है. जिस तरीके से पिछले 2 चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी सिकुड़ गई पूरे हिंदुस्तान में, अगले चुनाव के बाद और भी सिकुड़ जाएगी. और 2029-30 तक तो मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा हाल हो सकता है कांग्रेस पार्टी का, जिस तरीके से नेतृत्व काम कर रहा है, जिस तरीके से नेतृत्व जमीन दोष आप किसको देंगे? हो गया. जमीन की जो हकीकत है उस हकीकत को दोष आप किसको देंगे? राहुल गांधी रिस्पांसिबिलिटी कौन चला रहा है? भाई ऐसा है तो मैंने तो बताया कोई एक आदमी चला नहीं रहा है, 5 लोग चला रहे हैं. जब एक गाड़ी के स्टीयरिंग पे 5 ड्राइवर बैठेंगे तो उस गाड़ी का एक नहीं कहीं एक्सीडेंट होने वाला है. तो गाड़ी 5 दिशा में जा रही है, कोई इधर लेके जा रहा है, कोई उधर लेके जा रहा है. तो आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को भी चैलेंज करने वाले लोग हैं, राहुल गांधी को भी चैलेंज करने वाले लोग हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा तो जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो है. चल क्या रहा है? देखिए बहुत ज्यादा अब जो लोग हैं ना, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि बहुत आक्रामक एग्रेसिव होकर एक दूसरे को चैलेंज करें. वो बेसिकली वो मुझे दिखता है वो रूट खसोटने लगे हुए हैं कि कैसे हमको कुछ मिल जाए. तो जब ये मुगलों का जब राज खत्म हो रहा था तो
तो उस समय जो पूरे देश में अराजकता पैदा हुई थी और एक सरेआम लूटपाट चल रही थी, बिल्कुल वही स्थिति मुझे कभी कभी कांग्रेस पार्टी में दिखती है कि एक पुराना जो शासन तंत्र है वो नष्ट हो रहा है, बिखर रहा है, जिसको जहां जो मिल रहा है वो उसके ऊपर कब्जा कर रहा है, वो उसको मोनेटाइज करने या अपने हक में कोई निर्णय कराने में लगा हुआ है। और वो जो लोग वहां बैठे हुए हाईकमान बैठ के उनका इलेक्टेड मेरिट जीरो हो गया है। चुनाव हम भी हारे हैं, पूरे देश में सब लोग हारे हैं, लेकिन उनके अंदर वो माता नहीं रह गया कि अब जाके जमीन पे काम करके चुनाव जीतने के लिए कोई प्रयास करें। अब वो रूटलेस है, इलेक्टेड मेरिट जीरो हो गया है, बंद कमरे की राजनीति करते हैं और कैसे अपनी रोटी सेकी जाए, कैसे अपनी पोजीशन ठीक की जाए, इस प्रकार के प्रयास में लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो आउटडेटेड हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल नायब है, मतलब उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और बता हाईकमान बन गए। अतः ऐसे लोगों के हाथ में कोई पार्टी दे देंगे तो हमारे जैसे लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर बहुत बेचैन स्थिति में रहेंगे और बहुत ज्यादा वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। और मैं ऐसा अकेला नहीं, बहुत सारे लोग। पर क्या राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोज चुनौती देते हैं और चाहे वो अध्यक्ष ना हो पर लीडर कांग्रेस पार्टी में उन्हें ही माना जाता है, उनका क्या रवैया? उनकी कोई मंशा नहीं है कांग्रेस पार्टी को बचाने की? क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा जाए तो कितने बड़े लीडर निकल कर गए हैं, शायद गिनती करना मुश्किल हो। उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टी में या क्या आपकी क्या है, आपकी क्या जानकारी? मतलब ये तो नहीं कह सकता, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनके इंटरेस्ट नहीं है पार्टी में। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा 1 और 2 किया, ऐसा तो लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन वो इंटरेस्ट डायरेक्शन में है क्या? और आप साहब सारे फैसले भी अपने हिसाब से करवाएंगे और जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, ये कहीं ना कहीं गलत लगता है ऑर्गेनाइजेशन को, जहां तक ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज का संदर्भ है। और मुंबई में जो सीट शेयरिंग की एक प्रोसेस चल रही थी उस बारे में मैंने उनको आगाह किया था और मैंने उनको SMS किया था पूरा डिटेल में, और वो मैंने मेरे ख्याल से 17 फरवरी को किया था। आज देख लीजिए अप्रैल का महीना चल रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसलिए मैं कहता हूं संवादहीनता है। हम इतने गए गुजरे और यूजलेस नहीं है कि हमारे मैसेज के ऊपर हमारे जो हम जो एक इनपुट दे रहे हैं वो एक्शनेबल ना हो, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उनके ऊपर उनका कहीं कॉग्निजेंस लेना चाहिए। लेकिन पार्टी में किसी का कोई लेना देना नहीं, सबको अपना अपना ग्रुप है, किसी का सब अपने अपने ग्रुप के हिसाब से एक्शन लेते हैं और फैसले करते हैं और एक दूसरे को सूट करे, इस प्रकार के फैसले होते हैं और यही वजह है कि पार्टी का हाल बहुत बुरा है। संजय निरुपम जी, आपने कहा कुछ लोग ऐसे फैसले लेते हैं जिसे वो मोनेटाइज कर सकें, विस्तार में बताएंगे क्या मोनेटाइजेशन होती है? मैं अब इसमें मुझे बताना अच्छा नहीं लगेगा, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो मोनेटाइजेशन हुआ है वो उसका कोई सबूत मेरे पास नहीं। तो मैं बोलूंगा फलाने फला को पैसे दिए या फलाने पैसे देकर अपना कुछ काम कराया, आपने कुछ हासिल किया, तो वो एक ऐसा आरोप होगा जिसका सबूत मेरे पास नहीं होगा। तो इसलिए मैं किसी का नाम न लूं तो बेहतर होगा। नहीं, नाम ना लीजिए, पर क्या ऐसी चर्चा आ रही है और ऐसी बातें बड़ी नहीं, कोई टिकट्स देने में मोनेटाइजेशन होता है, किस फील्ड में मोनेटाइजेशन? टिकट देने में मोनेटाइजेशन में तो मतलब यहाँ पर लोगों के पास पीएचडी हासिल है उसके आगे जा चुके हैं सब। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कहाँ? थोड़ा सा और बता दीजिए, कितना आगे, कहाँ आगे? अब जाने दो, अभी क्योंकि मैं किसी का नाम लूंगा तो उसको साबित करना बड़ा आसान नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जनरली बता दे रहा हूँ। पता नहीं इस बात की जानकारी राहुल जी, सोनिया जी के पास है या नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है पार्टी में दिल्ली में जो धीरे धीरे एक दीमक की तरह पार्टी को खाता जा रहा है और वो एक दिन पता चला सब कुछ बर्बाद गिर जाएगा। इसकी जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सारे अलग अलग कोठरी में लोग अलग अलग अधिकार लेके बैठे हैं और अधिकारों का उपयोग अपने हक में अपने हित में करते रहते हैं, ऐसा आपको बहुत बार दिखा है। लेकिन ये जो करप्शन की लड़ाई लड़ रही है कि भाई डिक्टेटरशिप हो जाएगी और ये करप्शन के बदले जो ये एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, इससे तो ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पाक साफ है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो करप्शन के ऊपर एक हाई मोरल ग्राउंड दिया है वो बस सिर्फ दिखाने के दांत है, सच्चाई ये सब नहीं है। जैसे उदाहरण खिचड़ी चोर का मामला, अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इतने सख्त हैं तो आपको शिवसेना को बोलना चाहिए कि जिसकी ईडी में इंक्वायरी चल रही है वो कैसे हो सकता है? क्या इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है? और इतनी हिम्मत नहीं है तो उद्धव ठाकरे तो बच्ची कुछ शिवसेना के प्रमुख हैं, वो भी रामलीला मैदान जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कमेंट करते हैं कि भ्रष्ट जनता पार्टी है ये। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और अगर सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो आपका उम्मीदवार खिचड़ी चोर क्यों है? बड़ी बात। संजय निरुपम, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों बनाया जो कि संजय निरुपम अब किधर का रास्ता कर रहे हैं? बीजेपी से मोहब्बत हो गई है या शिवसेना शिंदे गुट से मोहब्बत हो गई है? अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि आज तो छोड़ने का निर्णय था, निकलने का निर्णय था, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि नवरात्रि के दरमियान आपको एक हम जानकारी देंगे अगर कुछ तय हुआ तो। Diminishing election after election. Last She won year, 1 lakh something, something. जहाँ 5 लाख से जीती थी. Okay. Now it's just been dwindling down, and Rahul Gandhi eventually just lost Amethi. So that's a different. Personally speaking, so I came back to the country. I studied. You went to Duke, I went right? Duke, yeah. So I got my master's in management studies from Duke. Came back and. So I wasn't thinking so much about politics at that point. I was quite young. But then my father got sick, as you know, and he was a cancer patient and spent quite a lot of time, in his treatments and getting treated in Singapore and so on. And cut to 2017. Pre-2017 is when our Vidhan Sabha election happened, and father at that point had completely passed on the baton. कि भाई देखो मेरी तबीयत अब सही नहीं रहती, and I think you should contest. And at that time, I was very lucky where almost every party was ready to offer me a ticket. My father being the sitting MLA for the last 5 terms, and Priyanka Gandhi approached me. I got a call from her office. I had to, I was asked to go meet her, and she was the one who inducted me into the party. And at that time, I hadn't met Sonia ji or Rahul ji at all because I was abroad, I was studying, and I was like doing whatever, other things. People have not met Rahul even today in Congress. I met him like really later on, by the way. I just had no I also had no real inclination of. I'm going to give you that because there are many people who say that who were recruited by Priyanka Gandhi don't come in the what should I say? They are not the cherry on the cake for the Congress party. Those who are picked by Rahul Gandhi to join, they get the plum posting. So that's one thing that one has heard. I don't know about this because I'm no longer doing reporting for the Congress party. Those doors are shut for me. But anyway, let me get to the point. You guys would have inside stories. So anyway, I won my election. I won handsomely from a Congress ticket, and things were fine. I was a first-time legislator. More than party work, I was focused on my own constituency and learning how things work in the Vidhan Sabha, and things were sort of fine. But eventually, when I started asking for more responsibility, it just I just didn't know who to talk to. And Priyanka wasn't around?
No, I have to say she did give me the time of the day. Maybe because I was from her constituency and Lok Sabha elections were around the corner. And they did win from the highest margin from my constituency. Sonia ji, she won from almost double the margin from my constituency than she did from the other Vidhan Sabhas within the Lok Sabha sector. And what would happen, which I found very interesting with her, and keep in mind, my father is someone who won consecutively for 5 terms from library, independent, from Congress ka Gar and all that, is that he was a very cadre-based man, right? He had his own sangathan, he had his own karyakartas. So I had seen a very different kind of politics, very grassroots, very jameen se jude hue. My father would call his BDCs and his pradhans all the time, and every time I go to his office, ab chai pee rahe, so very, very connected to the ground sort of thing. And when I would say things to Priyanka Gandhi that ma'am, I want to do this, और आप मुझे कोई छोटा सा मतलब महिला के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं महिला वाले, तो कांग्रेस के यूपी में उन्होंने 4 बनाए instead of like 1 प्रदेश अध्यक्ष, they made 4. So I was like, आप मुझे उन 4 में से एक बेशक बना दें, I don't mind. And so she would be like, हाँ yeah, why don't you go talk to XYZ, whoever, let's say संगठन ने किसी को कह दिया कि आप जाके शहजाद से बात करें, इनसे बात करें, उनसे बात करें, and we'll take it from there. I get it, okay, she's busy. And when I would try to talk to these people, be it in Priyanka Gandhi's office or be it in Rahul Gandhi's office at this point, those sort of Karyakartas or PROs or whatever you want to call them, Karyakarta the, essentially we are BJP Karyakartas or the Congress Karyakartas, they had more attitude than the Gandhi family themselves. अच्छा, reflected purely. Yeah, and I was like, ये अच्छी बात है. तो वही phone नहीं उठाते थे. It would take me longer to get in touch with some of these people who were supposed to, sort of line these things up for them. And they had more attitude. They wouldn't answer the calls. They wouldn't get back. So eventually, just the inefficiencies rattled me. I'm coming from a state where out in a house of 403 MLAs, you have 7 MLAs, 7, and that too after a Gathbandhan with Samajwadi, 7 in a house of 403, and people used to make fun of us, जब हम पहली बार विधायक बने थे कि अरे तुम कांग्रेस वाले तो एक इनोवा में चले जाया करो ना. I'll give you a small example. Raebareli से हूँ. Sonia ji was my MP. 2019 के चुनाव से just पहले, when she came for her नामांकन and all of that, when she came for her nomination, the only time they come to Raebareli is for the nomination, and then they forget about Raebareli for the next 5 years or whatever. नामांकन के लिए जब वो आई थी, keeping in line with this whole like soft Hindutva thing that they were like at that time, practicing. They went to a masjid and उन्होंने वहाँ चादर चढ़ाई है, ये सारा अपना किया जो भी ritual होते हैं. Fair enough. No photographers allowed. हम लोगों से भी, I was their MLA, कहा गया था कि कोई फोटो मत खींचना, nothing doing, है ना, फोन बाहर रख के आइए, right? And right after, so they did this whole thing, fantastic, अच्छी बात है. आपने वहाँ मीडिया क्यों नहीं अलाउ करी? Half an hour later, they went to some, पंडित जी के house में and all of that, काफी टाइम से जाते हैं, वहाँ उन्होंने हवन किया. दुनिया भर का मीडिया वहाँ allowed है. We were even told to take photos and tweet it or in Facebook and Insta, whatever, share on social media. Why the discrepancy? Why? Hey, if you, अगर आप अपने मंदिर में वो हवन करते हो, I'll show you and I'll show you those photos also. I still have them. I don't need it. I'm not sure why it happened. My conjecture is there is one photograph, only one photograph of Rahul Gandhi along with. The buck must stop somewhere. Across the world, the buck usually stops with an individual, even though the individual may not be bigger than the buck. But we've seen in the past, individuals take responsibility. Do you hold Rahul Gandhi responsible, or do you hold the people around him responsible, or do you believe just the structure of the Congress party is to blame when people like you today turn around and say there's psychophancy, there's lack of accountability when you've been in that same party for so many years? Rajdeep, that's a question you have to ask the Congress party. I don't belong to the party anymore. But I will ask you the question of the party. You're being diplomatic there. You're not going that far to name the individual. But I will push you on this. I'm not being diplomatic. You left the Congress and you seem to believe that you left it for good. I'm not being diplomatic. No, I'm not being diplomatic. But are you comfortable with the idea that you will now be? You're not being diplomatic, but you're not willing to name Rahul Gandhi directly. But I will ask you this: You're joining a party with Eknath Shinde as Chief President of Maharashtra. Narendra Modi ji is the Prime Minister of the country. Are you entirely comfortable now making this ideological shift? It's one thing to be angry, upset, disenchanted, disillusioned with the Congress. Does that necessitate the kind of ideological shift that you've gone and made to join hands with the Shiv Sena in Maharashtra and part of the larger BJP parivar at the centre? So Rajdeep, I think you're unaware of what's been happening in Maharashtra for the last 4 years. Who joined hands with the Shiv Sena? The Congress party. So when you talk about ideological shift, what ideology is left in the Congress? The party that ushered in economic reforms today is abusing businesses that were born out of those reforms. Have you once heard the former Prime Minister of India and former Finance Minister Dr. Manmohan Singh criticizing any industrial group? The Congress is aligning with UBT, which started out as a post-poll alliance, now they're doing a pre-poll alliance. I know exactly how the party leadership, what the party leadership feels about UBT. I know exactly what they feel. I know exactly how much they trust UBT. I know exactly what they think about their capability as a party and leadership. In fact, I'll go one step further. I know exactly what UBT thinks about the Congress. Maybe one day I'll have to spill the beans, but I don't want to do that. But the truth is, let's please not talk about Congress as ideological base. I don't know what Congress stands for anymore. It once was a centrist party, which took everyone along. It was a Big Tent party. It brought India together. Today, that same party is trying to create a north-south divide. Today, the same party is demanding a caste census. Today, regrettably, the same party is doing whatever it can to garner a few votes here and there. And I think and I believe that the public will eventually see through that as they did in 2019 and 2014. Is there is one photograph, only one photograph of Rahul Gandhi along with, if I'm not mistaken, with Rajiv Gandhi also. ऐसे करके खड़े हैं, and it was probably at Mohammad Yunus's son's funeral. And वो ऐसे करके खड़े हैं. और अगर आप उसको social media में देखोगे, every social media site which talks ill of the Gandhi family has that and said that they are closet Muslims because see they are praying in the Muslim way. So there is a lot of gand also about that. एक तो मैं आपको बता दूं, वो जिस समय पे ज्योतिरादित्य उनके साथ में थे, एक फोटो है. I'm not making this up. आप गूगल कर लीजिए, उज्जैन महाकाल लोग. उसमें वो जिस प्रकार से बैठे हैं, ऐसे जबकि मैं तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, तो नमाज के पोजीशन में वो बैठे हैं. तो अगर वो इस प्रकार से बैठेंगे तो लोग, चलिए सोशल मीडिया तो कुछ भी कह लेता है, परंतु मेरा सवाल ये है कि आप जो अदिति से सवाल पूछ रही हो, आपको सवाल ये पूछना चाहिए था कि महात्मा गांधी का राजनीतिक संकल्प क्या था? राम राज्य. महात्मा गांधी जाते जाते क्या गए? हे राम. उनकी समाधि पर राम लिखा हुआ है. महात्मा गांधी ने तो गौ बछड़े को और गौ की हत्या ना हो इसकी परिकल्पना की थी. महात्मा गांधी की कांग्रेस से हटकर ये नेहरू की कांग्रेस बन चुकी है. ये दरअसल महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये नेहरू कांग्रेस है. और इसीलिए राम राम से ज्यादा इनके रोम रोम में रोम बसता है. रोम मतलब वोट बैंक की पॉलिटिक्स बसती है. अब देखिए कि इस प्रकार का काल चक्र बदलता है, कोट अनकोट.
काल चक्र ऐसा बदलता है कि जिनके राजनीतिक नारे हुआ करते थे उत्तर प्रदेश से आती है, जानती है कि मिले मुलायम कांची राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज कहाँ मुलायम कांची राम, सब मिलके बोलो जय श्री राम। प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर भाजपा में आए हैं, जो उनकी कार्य करने की शैली है, जो उनका तरीका है, वो हमें बहुत पसंद है, तो इसलिए हमारे काफी अचानक लग रहा है, आपका सोशल मीडिया देखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी थे, आपका नाम चल रहा था कि मद्रास से शायद आपको लड़वाया भी जाए कांग्रेस की टिकट पर, इसी दौरान अचानक से आपने ये अगर सच होता तो मैं यहाँ नहीं होता, इसलिए मैं तो मद्रास से आपको लड़वाने की बात गलत थी। कि मैं क्या बताऊँ कि ठीक है कि हमने भारतीय जनता पार्टी का कहते कि उसमें शामिल हो तो आप उन पार्टी की बात करें तो बेहतर होगा। तो ये बताइए, तो बीजेपी की टिकट पे लड़ेंगे क्योंकि हरियाणा से दिल्ली से सीट। हाँ बिल्कुल, अगर चाहेंगे कि हम कहीं किसी भी जनता का प्रतिनिधित्व करें तो हम जरूर करेंगे। And you being in the BJP, how does that equation work at home now? लड़ते नहीं हो आप? Unfortunately, we got divorced. Oh, I'm so sorry. That's all right. That's all right. So how it played out is, and I wish him all the best. It was not at all a vicious separation. How it played out is when I decided to join the Bharatiya Janata Party, and being a young MLA, I wanted to be a part of the India growth story, and I decided very early on that I want to be under the leadership of Modi ji, and in my state under the leadership of Yogi ji. He was my chief minister, seeing his work and so on, and part of the government. So जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया, at that point my husband at that time Angad was supportive. भाई तुम्हारा अपना प्रोफेशन है, करियर है, स्टेट है, और मेरा अपना है. What happened towards the end during ticket distribution? मेरी टिकट हो गई थी, I was preparing. Priyanka Gandhi says to my ex-husband, you talk smack about her. I'm sorry, I'm trying not to use like curse language. So you say all these nasty things about her. चरित्र पर, ठीक है ना? About how she is and this and that, and I'll give you a ticket. And if you don't, I'm not going to give you a ticket. Sitting MLA of the Congress Party. No, I totally believe this, and that's why people when they say that these Gandhis are very empathetic, they're very kind, they are always saying. Did he get a ticket because of that? You think? He did get a ticket. He came for 3 months. हमारी अपनी पारिवारिक जो भी दिक्कतें समस्याएं थी, a lot of it caused by the Congress Party. So I would have people calling on बिल्कुल on his behalf, like not him, कि come back to Congress, it's going to affect your marriage. And I'm like, since when have you become an advocate for my marriage? Ministers and stuff. So some of them I told off. But so what they told my ex-husband is, they matlab Priyanka Gandhi, what she told my ex-husband is that you say all these things about her, nasty things about her, negative things about her, on record, do a press conference and everything, and हम आपकी tickets सुनिश्चित करते हैं. And he was like, listen, we may or may not be on whatever terms we may or may not be on, and वो सब अपनी जगह है, but this is I've not been raised to talk like that about women, especially not my wife or my family, and ये हमारा पारिवारिक मामला है. Not going to talk about her, which I really respect him for that. तो कांग्रेस केवल कांग्रेस नॉर्थ साउथ नहीं, केवल जातियों में नहीं, पति पत्नी और भाइयों में भी लड़ाई लगाती है. मतलब अब आजकल तो नॉर्थ वर्सेस साउथ कर रहे हैं, जातियों में डिबेट कर रहे हैं, पति पत्नी हो. And you know, sitting here now, like, God has been so kind. I'm sitting with Smita Prakash, like, it's things that but at that time, Angad lost his father when he was very, very young, fought it on his own. His mother was an MLA, then he became an MLA, and he's had his fair share of struggle. He came from the Congress family. It was just 2 young kids trying to make it in the world. They could have been a little supportive, So to go back to your point of view, my concerns which I had written in my letter to all senior leaders of the Congress Party, that if Congress Party leaders and allies of Congress Party are making anti-Sanatan statements, we can't give a silent approval to those statements. We can't silently accept those statements. Rajdeep ji, I told Congress Party leaders again and again that not going in Pran Pratishtha of Bhagwan Shri Ram is something like committing a sin. And if you are not going in on that particular day, 3 months had passed, Rajdeep ji. From the day the Pran Pratishtha invitation were refused, from that day till now, I had never appeared for any TV interview. I had not done any TV show, Rajdeep ji, because I was trying to pursue them that this is not the right path. Anti-Sanatan things are not the right path. Not going into Pran Pratishtha of Bhagwan Shri Ram is not the right path. No, please, Rajdeep ji, I'm a student of economics. Go ahead. I'm the student of economics. Right now, what Congress Party is doing, every day they are directly or indirectly criticizing the liberalization, privatization and globalization policies of PV Narasimha Rao Sahab and Dr. Manmohan Singh ji. Congress Party should be proud of. लगता है कि उससे कांग्रेस को बल मिला, लेकिन आप अगर देखते हैं जैसे वो असम पहुंचा, असम में लोग कांग्रेस को छोड़ दिया, बंगाल पहुंचा, ममता बनर्जी ने बोला आई एम नॉट विथ यू, फिर बिहार पहुंचा, बिहार पहुंचते नीतीश कुमार जी ने बोला मैं आपका साथ नहीं हूं, फिर यूपी पहुंचा, जयंत चौधरी ने बोल दिया कि मैं आपका पास नहीं हूं. तो मतलब जहां न्याय यात्रा किया वहां कांग्रेस का जो बचा कुचा भी था वो भी खत्म करके ही राहुल गांधी आगे बढ़ गए. नॉर्मली लोग आगे बढ़ता है एनिमी कैंप को डिमोलिश करते हुए, पर राहुल एक जीनियस है और अपना कैंप को ही डिमोलिश करते आगे बढ़ गए. राहुल जी के बारे में आप इतना जानते हैं, मैं आप ही का एक स्टेटमेंट भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो आपने कहा था वो आपको सुनवाना चाहती हूं. तो बॉडी डबल नहीं है तो दिखाना चाहिए था लोगों को, भाई ये बॉडी डबल नहीं है, क्यों नहीं दिखाया? गोरखपुर में मेरा पता नहीं, इसलिए मेरा माइंड ही ये सब नहीं दिखा. तो अभी बोले मैंने हिमंत विश्व शर्मा ने क्यों नहीं दिखाया? अरे हम तो नहीं दिखाया था कि मेरा आपका लीडर को डिफेम करवाने का मन नहीं था, आप खुद ही साथ हो डिफेम होना है, तो मेरा क्या हो. तो गौरव गोगोई को टिकट नहीं मिला, तो इसलिए गौरव गोगोई ने राहुल गांधी को डिफेम करवाने के लिए उसको वेपन बनाया. ठीक है, चलो एक दिन के लिए मैं भी यूज हो गया, मैं जानबूझ के यूज हो रहा हूं कांग्रेस का इंटरनल पॉलिटिक्स में. आप जानबूझ कर यूज हो रहे थे, आपको ये बॉडी डबल का आरोप कहां से आया? आपके पास कुछ मैंने खुलासा किया, जब राहुल गांधी असम आए थे तो मुझको लोगों ने बोलने लगा कि राहुल गांधी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेरा डाउट हुआ भाई उनको तो पहले कोई आगे में तो कोई क्रिकेट में रुचि है, ये तो हमको खबर नहीं मिला है. फिर आगे जाके सारा एसपीज लोग को मुझको बताने लगा कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, थोड़ा सा लगा. आपने जासूस छोड़ा? मैंने मुझको जो बताया था ना, एक तो रिपोर्ट आते ही है कि राहुल गांधी प्ले क्रिकेट इन माधुरी, तो ये रिपोर्ट इवनिंग आते ही जो हमारा रिपोर्ट कलेक्ट होता है, जो सिक्रेट होता है वही जाते हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया. लेकिन एक नेशनल टीवी ने एक फोटो पब्लिश किया कि इज इट राहुल गांधी इज यूजिंग बॉडी डबल. तो मेरा अडानी और अंबानी को तो सुबह से शाम गालियां दी जाती. मैंने अडानी के बारे में एक भी वक्तव्य देना उचित नहीं समझा. कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है. राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे जाने का जो न्योता ठुकराया गया है वो पॉलिटिकल प्लस माइनस हो सकते हैं, पर ये एक तरह का पाप है. और जब से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का कांग्रेस ने निर्णय लिया, उसके बाद से मैंने कांग्रेस की ओर से टीवी पर बैठना और प्रेस वार्ता करना बंद कर दिया.
मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को जाके कहा कि साहब सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को जो आप गाली बोलते हो उसको बंद करना चाहिए। वेल्थ क्रिएटर्स कोई पाप नहीं करते हैं, अपनी मेहनत से, अपने आइडिया से, अपने कैपिटल से पैसा कमाते हैं, तो देश को भी फायदा होता है, रोजगार का भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा थे उसके बाद कांग्रेस के दावा थे कि पूरे भारत के समर्थन उन लोग को मिले हैं और वो बताया कि इस बार के जो चुनाव है वो लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। तो आप लोग का जो हम लोग पहले भाषण होता है, तो हम लोग को एक बात बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी का जो टेकलाइन है आपकी बार 700 पार, वो हमको अटैक किया है। तो कांग्रेस का जो भारत जोड़ो स्ट्रेटेजी है वो बीजेपी का आपकी बार 700 पार का जो प्लेन है उसको तोड़ेगा क्या, वो ब्रेक करेगा क्या? देखिए, मेरा हिसाब से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत किया, जो मैसेज होना चाहिए वो मैसेज वहां नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होगा असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आया, जो दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उसी समय, एग्जैक्ट समय में उन्होंने बोला कि हम बटरद्रबा थान में जाऊंगा। तो हमने बोला 2 घंटा पीछे जाइए, इसलिए असम और यूपी मत कीजिए, राम भर से शंकरदेव मत कीजिए। फिर क्या किया, रास्ता में बैठ गया, फिर यूपी चला गया। यूपी में कोई रिपोर्टर उनको सवाल किया, वो पूछने लगा तुम्हारा कास्ट क्या है। तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था वो भारत तोड़ो अन्याय यात्रा तक कन्वर्ट हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने उस बिजनेस समूह का भी विरोध किया और अडानी और अंबानी को तो सुबह से शाम गालियां दी जाती। मैंने स्वयं ने अडानी के खिलाफ प्रेस वार्ता की, पर जब सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी तो उसके बाद मैंने अडानी के बारे में एक भी वक्तव्य देना उचित नहीं समझा। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी मैंने ऐसा कहा कि जब सबसे बड़ी मार्केट रेगुलेटर जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने जब अडानी को क्लीन चिट दे दी तो अब हमें बस करना चाहिए। तो सुबह से शाम एक ही चीज, सनातन का विरोध करो, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का न्योते को अस्वीकार करो। अडानी, अंबानी और कोई भी इतने सैकड़ों स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, क्या हम उनको गालियां दें? क्या वो देश के लिए अपना काम नहीं कर रहे? सिवाय गाली, और मैं आपको कह रहा हूँ ये सारी चीजें मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेताओं को अवगत करे और उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। 4 महीने तक मैं हर शीर्ष नेता के पास ये इश्यूज लेके जाता रहा और मैंने ये भी कहा कि हर प्रतिवर्ष में बजट पर अपनी प्रेस वार्ता करता हूँ। इस साल भी मुझे बोला तो मैंने कहा जब तक भगवान राम के दर्शन करने कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं जाएगा, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से ना तो टीवी में बैठूंगा ना प्रेस वार्ता। ये सारी चीजें मैंने अपनी चिट्ठी में भी देश के सामने रखी। और चौथा एक और, मैं उस चिट्ठी में भी उस चीज का विवरण है कि कांग्रेस पार्टी नए लोगों को, नए आइडियाज को हडल करती है। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी जब उनके 42 सांसद थे, तो मैंने सोचा देश की सबसे पुरानी पार्टी में नए लोगों की, नए आइडियाज की, एस्पिरेशनल इंडिया के लोग के महत्वाकांक्षा को समझने की ताकत होती है। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है। अगर उस आदमी के आइडिया में दम होता तो कांग्रेस पार्टी 42 और 52 पे थोड़ी आती। कांग्रेस पार्टी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब भी वही आदमी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के रूप में टीवी पर डिपेंड करता था, आज भी वो कम्युनिकेशन का प्रभारी बना, वो पीए है। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए आज कांग्रेस चला रहे हैं, जिन्होंने कभी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। क्लास के मॉनिटर का चुनाव कैसे लड़ते हैं उन पीएस को नहीं पता है। जो टिकट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा के, उनको अगर आप पूछो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग राज्य है तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो। अगर आप उनको बोलो कि जालो सिरोही कहाँ है तो वो कहेंगे कि शायद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगा। ये उनका ज्ञान है, ये कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, नीति पर चल रहे हैं। लेकिन असम में मुझको कोई खरीदा धमकाने का जरूरत नहीं, सब मेरा घर का ही बेटा बच्चा है। मैंने 22 साल कांग्रेस में रहा, जो भी कांग्रेस में है वो हमारा या तो फैमिली फ्रेंड था, या भाई था, या बड़ा भाई था। तो मैं किसको धमकाऊं? आज भी कभी जाते जाते 10 कांग्रेस, एक यूनियन मिनिस्टर था फॉर्मर वीरेंद्र सिंह, उनका बेटा अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी पिताजी मेरा घर में 2 मिनट पहले खुद आया कि मैं बेटा को आपका हवाला कर रहा हूँ। तो दिस इज ए ऑनगोइंग थिंग और मुझको किसी को धमकाने का जरूरत नहीं। और भूपेंद्र बड़ा खुद भी आ जाएगा थोड़े दिन बाद, बाकी चल रही है, खुद ही आ जाएगा। इट इज लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर क्या मतलब? लॉ ऑफ नेचर है कि असम में एक कम्युनिटी को छोड़ के बाकी जितना कांग्रेस का लीडर है सारे विदिन 2 इयर्स दे विल बी विद बीजेपी। तो भूपेंद्र बोरा कब तक आएंगे? मेरा लगता है ये चुनाव का तुरंत बाद। मैं कुछ आपके पुराने स्टेटमेंट्स आपको सुनवाना चाहती हूँ जो आपने चाइल्ड मैरिज पर किए हैं। आपने अपने असेंबली में क्या कहा, पहले आपको सुनवाती हूँ, फिर सवाल पूछूं। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। अब होने नहीं दूंगा। जब तक शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज। सुन लीजिए, मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, 2026 का पहले ये बंद कर दूंगा। आप बहुत गुस्से में थे जब ये कह रहे थे, और एक स्टूडेंट का भी सवाल है कि आप मुसलमानों के इतने खिलाफ क्यों हैं? ये मैंने खिलाफ नहीं बोला। सबसे ज्यादा पीड़ित है मुसलमान का बेटी। आप देखिए, आज आप थोड़ा सा ओएसी और मेरा बात में आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए। ओएसी बोलेगा कि ले ये जो बच्ची शादी करते हो, 2 दिन बीवी होते हैं, ये हमारा कल्चर है, इसको आप टच मत करो। लेकिन हमारा संविधान और हमारा जो सरकार है सबका है, या तो आप वोट दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता है। एक अगर 11 साल का बच्चा मां बन जाते हैं, देन हाउ कैन यू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट? ही इज ऑल्सो योर सिटीजन। तो ये स्टेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि मुसलमान बेटियों को एक सीएम, बिकॉज ही इज ए हिंदू, ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर। तो मैंने क्या किया हूँ, हमने चाइल्ड मैरिज बंद किया। अभी हमने निर्णय लिया हो कि मुसलमान नहीं, सारे बेटियों को शिक्षा देने का जिम्मेदारी सरकार उठाएगा। फ्री एडमिशन होगा, फ्री स्कूटी मिलेगा, फ्री साइकिल मिलेगा, साथ में उनका अकाउंट में भी मैं 1000 रुपया प्रति महीना दूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वी हैव अनाउंस्ड दिस स्कीम। तो इसलिए एंड दैट मनी विल गो मेनली टू द मुस्लिम गर्ल्स। तो मैं मुसलमान समाज में एक जागरण कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, नोइंग वेल कि कोई लोग मुझको खराब पाएगा, लेकिन चाइल्ड मैरिज बंद करो, ये शोभा नहीं देता। अगर हिंदू में है, हिंदू में भी बंद होना चाहिए। दूसरा कि एक हस्बैंड का एक समय एक ही बीवी होना चाहिए। बिकॉज पर्सनल लॉ का क्या होगा? कोई पर्सनल लॉ नहीं है। इट अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमन। यू विल बी नोन एज ए दूसरा बीवी, तीसरा बीवी। इट अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमन। तो मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ कि मैं माँ का कोख से जन्म लिया हूँ, तो माँ का सम्मान देना असम में ये मेरा जिम्मेदारी है। और 2026 सन का पहले मैं 2 बोथ इन रेगुलेटरी एंड फैसिलिटेटिंग, मैं ऐसा नहीं कि खाली अरेस्ट कर रहा हूँ, अरेस्ट साथ में सुविधाई, साथ में लोगों का साथ संवाद। मैंने 2 एजेंडा उठा के रखा हूँ कि असम में चाइल्ड मैरिज बंद हो जाए बाय 2026, साथ में ये जो मल्टीपल मैरिज है ये बंद हो जाए। ये 2 काम मुझको करना है। देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ यूसीसी।
और मैं आप लागू करेंगे? नहीं, हमने अभी फास्ट कदम उठाया, जो मुस्लिम रजिस्ट्रेशन एक्ट था उनको खत्म कर दिया, और अभी उत्तराखंड का हुआ है, उनमें भी कोई कोर्ट का चैलेंज है क्या है मैं देख रहा हूं, लेकिन मैंने मेरा सेंट्रल लीडरशिप से ये अनुमति लेके रखा हूं कि राइट टाइम हम असम में यूसीसी लाने में कोई इशू नहीं है, वी कैन ब्रिंग यूसीसी इन राइट टाइम, और वी कैन एनेक्टेड अ लॉ बैनिंग पॉलीगैमी। चाइल्ड मैरिज वाला तो मैंने कर दिया ऑलरेडी, आई हैव डन किया। तो यानी कि एक यूसीसी नहीं, आप एक-एक करके प्रथाएं strategy can be all that, you can bring one and UCC at one go, or you can demolish things bit by bit. पब्लिक सवाल पूछना चाहती है Your और long note that you've written, you haven't specifically named Rahul Gandhi, the individual. Are you blaming him for this lack of accountability or what you call the suffocating atmosphere in the Congress, because you are perceived to be someone who's very close to the Gandhis? No, I'm not blaming anyone. I'm blaming the party as an institution. The party transcends an individual. And unfortunately, Rajdeep, we have to get over the notion that the party belongs to one individual. The party transcends individuals. It's an organization. Today, for instance, I heard some Congress leaders saying, Milind shouldn't have done this on a day when Rahul Gandhi was embarking on a yatra. Think of how entitled that sounds. A good organization would have said, a good, talented young person, an experienced person, a good face of our party, has a problem. Let's talk to him or her, sit down with them, find a way to resolve an issue. Instead, the party's attitude is you resigned and you left and you joined another party on a day when you take media attention away. That just gives you a sense of how entitled the party is and how it's entitled to speak up. It really pains me when I heard that statement of a leader saying, No, but many people say that, but effectively saying, couldn't you have chosen a better day? No, but Milind Deora, there will be those who say that you are also part of this entitled elite, that your father was a political time. No, one minute. You use the word. No, sure, but Let me finish. No, one second. let me respond to your use of the word entitled. Sent a message to me Mr. which Deora, said, you could have chosen a better day. Yes, I'll come to that. But when the leader said you could have chosen a better day, I tell you this, that gave me the strength and confidence to take that decision. I was still wavering, I would say. But the fact that the party could send me a message like that, couldn't you have chosen a better day? A senior leader just goes to show how the party thinks, how the party has no ability to deal with human resources. It has no ability to utilize talent. And I'm not somebody who's left in a huff. I'm not somebody who's left in a rush. I've stayed for 10 long years without any power. I'm not someone who's selfish and who said, I've lost one election and I'm running away. I didn't do that. I know what the depth of my relationship with this family, the party wants. But there comes a time, as I said, where you have to take a decision. You have to identify in life what your purpose is. And your purpose, your loyalty has to be to a greater cause than one party which doesn't value you, or a family, or someone else, or even a leader. And I believe that the clarion call that the Prime Minister has offered me. I have two points. The loyalty to the country comes before the party. And when I spoke to Mr. Shinde, I'll tell you, when I spoke to Mr. Shinde, he echoed a similar sentiment. He said that here, do something for Maharashtra, help me do something for Mumbai. Let's do it together. You have a vision, you have the ability, you have the experience. That is never something I've heard in the Congress in the last few years, unfortunately. Decline of the Congress, let me put it that way. What is the big difference that makes Narendra Modi today more attractive for Milind Deora than Rahul Gandhi, apart from the fact that Mr. Modi is in power for the last decade? You asked me a question that you were writing 2024 as a done deal. My sense is, and even before I made this announcement today, that people like Eknath Shinde ji, people like the Prime Minister, people in BJP, even though they have tailwinds in their favor, they work hard. They don't take things lightly. And that is the fundamental difference between this alliance and the other alliance. The other alliance thinks it's there, the Indi alliance and many parties, and I can certainly speak about my former party. It's unfortunate, but the Congress thinks that the voters of India owe the Congress party a return to power. I don't think that the other parties on the side that I'm on now in the NDA believe that. They believe you have to work hard to earn the people's trust. The fact that I could receive the message that I received today just shows you what is wrong with the Congress. And beyond that, I just want to wish them my best. I only hope through your channel, if they're watching this, that they will move towards being a more constructive opposition in this country. I think there are many Indians who, despite the fact that they may be supporters of the NDA, they still feel that the country needs a constructive opposition. They understand that it's important to have a constructive opposition to bring out constructive suggestions. If tomorrow the government announces a particular initiative, it helps to have a constructive opposition which can say, no, don't do it this way, do it this way, this will work better. And I only hope through your channel and through the show that the Congress and other opposition parties move towards being more constructive, move towards being more development-oriented, move towards being less obstructionist, move towards revisiting their old ideology. Their old ideology is fundamentally different from the current ideology. As I said, economic reforms to abusing corporates, calling them anti-nationals. A party which had a certain view on UCC 370, today having completely different views. So the party unfortunately has lost its way. And it's important for people who want to serve, who are capable, who believe in meritocracy, who have the ability to move out and chart their own path. I don't recommend that for anyone in any party. If your party and your organization is not giving you a platform to serve your constituents or your country better, you should leave. You should do that in any organization, not just political. You should do that if you're running a media channel, you should do that if you're working in a company. The purpose of what that organization represents is greater than an individual running that organization or even the organization itself. तो आप यूनाइट करेंगे मुसलमानों को हिंदुओं के साथ? आप तो कहते हैं दिल्ली में हमें चुनाव ही नहीं जीतना। नहीं, पहले मेरा बात है मुसलमानों को यूनाइटेड करो, उसमें कोई बड़ा और ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, हमारा भी नहीं होना चाहिए। अगर हर कम्युनिटी में कोई कास्टिज्म नहीं रहता है, दैट इज आइडियल वन, और उसमें तो हमारा तो आसाम इज अ कास्टलेस सोसाइटी एंड वी एंजॉय दैट, तो हमारा तो कोई इशू ही नहीं है। आपका इशू सीएए और एनआरसी नहीं, हमारा इशू देखिए, असम का आइडेंटिटी हमारा इशू है। हमारा जो असम का मूल निवासी या भारत का जो मूल निवासी है, दे शुड नॉट बिकम माइनॉरिटी। सिंपल मुद्दा है, वो हमारा इशू ऑफ आइडेंटिटी है। इसमें कोई रिलीजन नहीं आते हैं, हमें यही जानता हूं कि भाई मूल निवासियों से असम को आप मत छीनो। तो इतना ही छोटा हमारा डिमांड है। मैं जनता के भी कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि ट्विटर पर जब हमने सवाल मंगाए तो जनता ने क्या पूछा। कुणाल किशोर का ट्विटर पर सवाल है, ये जो ईडी सीबीआई जैसे प्रशासनिक विभाग है, क्या ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही समन भेजती है, ऐसा क्यों? अंजनी कुमार राय का गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सवाल है, कांग्रेस को वोट देकर फायदा नहीं, जीत भी जाएगा तो बीजेपी में आ जाएगा। इस बयान से क्या आप लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया को कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठा? देखिए, बात ऐसा है, ईडी और सीबीआई का नोटिस रूलिंग पार्टी में भी आ जाता था अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी ऐसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे सलाहता है, किसी को करप्शन करने का सोच भी नहीं सकता है।
अगर विपक्ष में भी सोनिया गांधी राहुल गांधी अपना स्ट्रिक कर देते हैं जैसे मोदी जी करते हैं, विपक्ष में भी ईडी और सीबीआई का नोटिस नहीं जाएगा। लेकिन आप कर्नाटक तेलंगाना जैसा प्रदेश को अगर आप एटीएम बनाएगा, कोई दिन ना कोई दिन तो ईडी सीबीआई का नोटिस जाएगा ही जाएगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी स्टेट एटीएम नहीं है, होना ही नहीं तो इतने पैसे आपके पास कहां से आ रहे हैं? कहां से आते हैं इतने पैसा? वो एक आपने सुपरलेटिव लगा दिया। हमारे जो कार्यकर्ता भी असम में, मेरा जो चुनाव होगा हमारा कार्यकर्ता लोग ही संभाल लेगा, उसके लिए हमें किसी से पैसा मांगने का जरूरत नहीं है। इसलिए मोदी जी असम को इतना पैसा दिया है, हमें और क्या चाहिए? सबका अकाउंट में पैसा भरा हुआ है, हर महीना अरुणोदय जमा होते हैं, हर साल किसान सम्मान निधि जमा होते हैं। आपको चुनाव कर एक्स्ट्रा कुछ पैसा लेना तो नहीं है। तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में 6000 करोड़ से ज्यादा क्यों आया? वो तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में लोग तो चेक काट के दिए हैं, कोई तो काला रुपया तो नहीं दिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, रेड करो, फिर उसी कंपनी से अकाउंट में ले लो। मतलब इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विदाउट डोनेशन। आप इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि 90 लाख रुपीस हर एमपी कैंडिडेट का पास होना चाहिए। दे हैव द स्पेंडिंग लिमिट ऑफ 90 लाख। वो 90 लाख रुपीस पार्टी तो भेजेगा कैंडिडेट्स को। अगर चुनाव में बिजनेस कम्युनिटी थ्रो चेक, या मेरा भी मन है, यू वांट प्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी, आप अगर चेक में डोनेट करने का रास्ता नहीं होते हैं तो देश में ब्लैक मनी आएगा। वन शुड सी द स्पीचेस ऑफ लेट अरुण जेटली। अरुण जेटली जी ने क्या बोला था कि आप चुनाव प्रक्रिया में व्हाइट मनी आने दीजिए। अगर व्हाइट मनी आते हैं तो काला धन अपने आप चला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, पर आरोप लगता है कि दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को आपने इसी दौर में, यानी कि लोकसभा चुनाव के चुनाव अनाउंसमेंट से पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और दूसरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद अरविंद केजरीवाल को कल अरेस्ट किया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि सचमुच जो आरोप लग रहा है कि मोदी जी केजरीवाल जी से डरे हुए हैं, ये सही है? देखिए, अगर आपका पास एक नोटिस आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 9 नोटिसेस होते हैं, लेकिन आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं जाते। जब मोदी जी मुख्यमंत्री था, गुजरात का मुख्यमंत्री, मोदी जी का उस समय एसआईटी फॉर्म हुआ, मोदी जी को नोटिस दिया गया एसआईटी को सामने आने के लिए। मोदी जी वेंट एंड मोदी जी अपीयर बिफोर द एसआईटी। आपको दृश्य भी मालूम, अभी भी इट इज इन द, यू कैन रिकलेक्ट दोस विजुअल्स। अमित शाह जी का ऊपर नोटिस आया, अमित शाह जी नोटिस को रेस्पेक्ट किया, कोर्ट ने बोला कि आप गुजरात मत जाओ, ही हैज नॉट डन। नाउ ये जो दोनों सीएम का एक बातें है कि आपको ईडी हो, सीबीआई हो, एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर आपको नोटिस देते हैं और आप विपासना में सलाह जाते हैं, तो व्हाट विल बी द लॉजिकल कंक्लूजन? और एक बात कम से कम भारत में अभी प्रतिष्ठा हो गया कि करप्शन करेगा तो सीएम का भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है फ्रॉम एरेस्ट। सो वी आर ऑन नोटिस नाउ। पर वो कह रहे हैं कि एक कानून हो गया ना कि सीएम इज नॉट आल्सो अबव द लॉ। मैं जनता से पूछना चाहूंगी, कुछ सवाल है, आप समझते हैं कि केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया है वो सही है? हाथ खड़ा करके कौन सवाल पूछना चाहेगा? चलिए यहाँ माइक अगर दिया जाए। खाऊंगा भी नहीं और खाने दूंगा भी नहीं। तो अभी आप वो कैटेगरी में आप आएगा नहीं आएगा कि यू हैव टू डिसाइड इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोदी। आप अगर सोचता है कि मैं एक्साइज का भी घोटाला कर लो, मैं माइनिंग का भी घोटाला कर लो, और मोदी शुड बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, थोड़ा ये टू मच हो जाता है। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, अब मैं कुछ नाम बताती हूँ। अशोक चव्हाण, कारगिल वॉर विडोज का उन्होंने ले लिया, और ये बड़ा स्कैम बीजेपी का ही होता था। आप देखिए, वो बीजेपी जो दिन अशोक चव्हाण जी पार्टी में ज्वाइन किया है, उस दिन उनका खिलाफ कोई केस नहीं। तो मतलब आपके पुराने चार्जेस गलत थे? नहीं, आप देखिए पुराना चार्जेस का क्या पृष्ठभूमि था, कोर्ट में क्या जजमेंट दिया। आई कैन नॉट कमेंट ऑन द कोर्ट जजमेंट, बट नॉर्मली हमें यह प्रिज्यूम करना हो कि एक बार कोर्ट किसी को क्लीन चिट देते हैं, उसका बाद उस चीज का बहस नहीं होता है। दैट इज द जुडिशियरी व्हिच वी रिस्पेक्ट। और उसी हिसाब से गरिमा बनते हैं कि एक बार मेरा ऊपर आरोप लग सकता है, मैं लगाऊंगा आरोप, पर एक बार कोर्ट बोल देता है आपका खिलाफ कोई आरोप नहीं है, फिर वी डू नॉट रिपीट दैट। तो फिर अजीत पवार साहब, उनके बारे में 70,000 करोड़ के बारे में बात की थी बीजेपी ने। वो पॉलिटिकल एलिगेशंस है, पॉलिटिकल एलिगेशन बीजेपी आने का बाद भी अगर किसी का ऊपर केस है उसको कोई क्लीन चिट नहीं मिलते हैं। आप हमारा पार्टी में यू कैन बी अलायंस, बट आपका कोई पुराना केस अगर होगा उसको क्लीन चिट नहीं दिया जाता है। मुंबई पुलिस ने मूव किया है कोर्ट के बारे में। दैट इज ऑन मेरिट। अगर मुंबई पुलिस को अगर मेरिट में लगता है कि हमारा उनका खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुंबई पुलिस कैन मूव टू द कोर्ट। बट जिसको लगता है कि सबूत है, दे कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट एंड चैलेंज दैट पर्टिकुलर एफआईआर और एफआईआर व्हाटएवर इट इज। लेकिन हिमंत दादा, लोग ये भी कहते हैं कि आप जब कांग्रेस में थे तो आप पर भी चार्जेस। मेरा फिर भी चार्जेस था, मैं मना क्यों कर रहा हूं? मैं बढ़िया से सीबीआई ने मुझको नोटिस दिया, मैं सीबीआई का लेकिन मसला जब से आप बीजेपी में आए तब से नहीं। यही मैं बार-बार बोलता हूं, बीजेपी में ज्वाइन किया 2015 अगस्त में, एंड कोर्ट हैज गिवन मी क्लीन चिट इन 2014 दिसंबर। मैं बीजेपी को किसी को जानते भी नहीं था जब कोर्ट से मुझको क्लीन चिट मिला। तो ये बात आप लोग का जो चैनल में आते हैं बार-बार भूल कर देता है, और जब मैं कोर्ट का नोटिस देता हूं तब चुपचाप हो जाते हैं। नहीं भैया, विपक्ष आप पर इल्जाम लगाता है। वही प्रॉब्लम है ना, विपक्ष का कोई स्टडी नहीं है, विपक्ष का कोई एनालिसिस नहीं है, और आप थोड़ा जोड़ के पूछो तो भाई उनका ऊपर क्या आरोप है वो भी बता नहीं पाएगा, खाली बोलेगा ओ भाई बताओ तो। मैं तो हमेशा हर कॉन्क्लेव में जाता हूं, विपक्ष का साथ आप हमें बैठा भी देते हैं, मैं तो पूछता हूं भाई मेरा ऊपर क्या चार्ज है बताओ, और मैं आपको भी पूछता हूं मेरा ऊपर क्या चार्ज है बताओ। चार्ज अरविंद केजरीवाल भी पूछ रहे थे कि उनके ऊपर क्या है बताओ, लेकिन समन जब मेरा ऊपर एक समन आया था, पहले समन में मैं चला गया था, 9 समन मैंने ऐसे घुमाया नहीं। 2014 मेरा ऊपर समन आया, मैं बढ़िया में कलकत्ता गया, मैंने बोला देखो मेरा क्या है बताओ। उन्होंने मुझको पूरा 6-7 घंटा पूछताछ किया, तब मैं कांग्रेस का मेंबर था। फिर दिसंबर 2014 मुझको क्लीन चिट दिया, मैं क्लीन चिट लेकर सोनिया गांधी का पास गया कि मैडम ये मेरा क्लीन चिट है, अभी आप आसाम को ठीक करो। तो उन्होंने बोला तुम तो क्लीन चिट मिला है लेकिन ऊपर का भी कोर्ट है, थोड़ा इंतजार करो। मैं बोला ठीक है आप इंतजार करो, मुझको इंतजार करना तो नहीं है, मेरा कितना बयस उम्र तो रहेगा नहीं, मुझको आगे बढ़ना है। तो विद द क्लीन चिट आई फास्ट वेंट टू सोनिया गांधी प्लेस, आई डिड नॉट वेंट टू एआईसीसी बीजेपी हेडक्वार्टर। तो इसीलिए मेरा बारे में जो लोग बोलते हैं उनको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रखना चाहिए। तो सोनिया गांधी जी के पास आप गए और उसके बाद आप राहुल गांधी जी के भी पास गए? मैं नहीं गया राहुल गांधी जी का पास, वो तो उस दौरान 2011 से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ, उस दौरान उनसे मीटिंग मटंग होते रहा। लेकिन जो दिन सोनिया गांधी ने मुझको बोला कि भाई मैं आपको मदद नहीं कर पाता हूं बिकॉज ऑफ माय कंपल्शन, तब मैंने अपना रास्ता ले लिया। इसलिए देखिए मेरा इशू में ना कांग्रेस मुझको कुछ बोल सकता है ना मैं कांग्रेस के लिए आंसरेबल है। मैं तो पहले कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पास गया, एंड कभी मैं आपको पूरा डेटा लिस्ट दे दूंगा जो आपका स्टूडियो में कि आके अपोजिशन ऐसे ऐसे कोई स्पोक्स पर्सन बोलते रहता है, उनको थोड़ा दे दीजिए कि ये जैसे। इसलिए हम वो सब नहीं, हम लोग को क्या करना है। तो सोनिया जी ने क्या राहुल गांधी जी को बताया नहीं होगा कि आपको बेनिफिट मिला है? सोनिया, टू बी फेयर टू हर, सोनिया ने राहुल को बताया था
कि हिमंत का पास बात करो, उनका क्लीन सीट भी है, सारे कुछ है। और देखिए वो क्लीन सीट से कोई सवाल भी नहीं था, वो तो ऐसे एक दिन बुलाने वाला, मेरा ऊपर कोई इंजाम ही नहीं था, तो वो सब अलग बात है। बट ही डज एडवाइस राहुल गांधी, ही डज डिड एडवाइस टू राहुल गांधी कि इसको मिला लो। लेकिन राहुल तो बहुत एक्सपर्ट है ना, उनको अपना जगह तो अभी जानते हैं, वो अपना माँ को भी नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, माँ की बात नहीं मानते हैं। वो तो आप नटवर सिंह का तो बायोग्राफी आप खुद देखा है, आपने खुद पढ़ा है, उनको माँ को एकदम नहीं मानते हैं। वो तो मैं जीता जागता एक एग्जाम्पल हूँ। आपने कभी ये नोटिस किया? नोटिस ने मुझको डायरेक्ट बोला कि देखो हिमंत, मेरा कंपल्शन है, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आप थोड़ा राहुल से रिश्ता बनाओ। मैं बोला भाई मैं आपसे आपका साथ में क्लोज हूँ, या आई कैन कम एंड मीट यू, फिर ये क्या चक्कर है? तो ये राहुल माँ को बात नहीं मानते हैं, सोनिया राहुल से डरते हैं। ये बिकॉज घर का जो बच्चा किसी का काम में नहीं होता है, घर में आके हल्ला गुल्ला करके टेबल तोड़ देता है, उनको तो सब डरता है घर में। आपने देखा है टेबल वेबल तोड़ते हुए? टेबल तोड़ना मैंने पढ़ा हूँ नटवर सिंह का बुक्स में, लेकिन माँ को नहीं मानना वो मैं खुद एक्सपीरियंस किया। तो ये एक अद्भुत ये है, मतलब लेकिन वो जो कास्ट सेंसस की बात करते हैं उसमें तो मेरे आप कास्ट सेंसस आपने क्यों नहीं किया? अभी तो हमारा सरकार ने बिहार में कास्ट सेंसस करवाया, कास्ट सेंसस में तो कोई मना नहीं है, लेकिन कास्ट सेंसस खाली हिंदू में नहीं होना चाहिए। मेरा जो स्ट्रॉन्ग वॉइसेस है, जैसे असम में वी हैव ए मुस्लिम कम्युनिटी, नाउ दे आर डिमांडिंग कास्ट सेंसस कि हमारा कास्ट का सेंसस करो, असम इस मुस्लिम कम्युनिटी है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि खाली कास्टिज्म हिंदू में, कास्टिज्म मुसलमान में नहीं है। तो योर कास्ट सेंसस शुड नॉट डायरेक्टेड टू डिवाइड हिंदू, इट शुड बी डन जेन्युइनली। और सारे कास्ट का भी इसमें कास्ट सेंसस करो। क्रिश्चियन में कास्ट नहीं है, कोई बैप्टिस्ट मानते हैं, कोई कैथलिक मानते हैं। ये कास्ट का खाली कास्ट इसी से नहीं होता है। एनी सेग्रीगेशन विद इन द कम्युनिटी मींस देयर इज अ कास्ट एंड क्लास। तो आपको अगर कास्ट सेंसस करना है, बिकॉज हिंदू है सेगमेंटेशन, हमारा डिविजन पुरानी दिनों से है कि हम ये कम्युनिटी, आप ये कम्युनिटी, आप बेशक करिए हिंदू में सेंसस, पर एक साथ आप मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी में कीजिए, बिकॉज वहां में भी डिप्राइव लोग होते हैं, उनका भी न्याय के बारे में सोचो। इकोनॉमिक, वो क्लास इकोनॉमी नहीं है, वो क्लास नहीं है। हमारा भी जो कास्ट का जो फाउंडेशन था वो भी इकोनॉमी ही था, धीरे धीरे वो एक अलग रूप ले लिया। लेकिन मुसलमान समाज में भी जो कास्ट है, अभी प्रधानमंत्री जी पसमाना मुसलमान का बात बोलते हैं, हमारा यहाँ में अभी मैं बराक वैली में से आया, बराक वैली का मुसलमान में फिशरमैन कम्युनिटी है, किरेन कम्युनिटी है, तालुकदार कम्युनिटी है, दे आर नॉट इकोनॉमिक डिवीजन, दे आर कास्ट। इवन मस्जिद का इमाम भी एक, अगर उनका कम्युनिटी का आप पकड़ ले कि दे आर फ्रॉम ए डिप्राइव्ड कम्युनिटी, उनका कम्युनिटी का इमाम भी बड़े कम्युनिटी का मस्जिद में इमामती नहीं कर सकता है। असम में ही उसका उदाहरण है। देयर इज ए कास्ट इन एवरी रिलीजन और एवरी स्टार्टा। बट जो हिंदू को डिवाइड करना चाहते हैं, खाली हिंदू का कास्टिज्म फोकस करते हैं, लेकिन मुसलमान या बाकी रिलीजन का अंदर जो कास्टिज्म कास्ट है, दे डू नॉट वांट टू रिकॉग्नाइज दैट। तो मेरा ये मानना है, आई एम नॉट एस्पाउजिंग माय पार्टीज व्यू पॉइंट, मेरा ये मानना है कि कास्ट सेंसस में कोई मना नहीं है, लेकिन इट शुड इंक्लूसिव, इट शुड इंक्लूड एवरीबॉडी, इट शुड नॉट बी टारगेटेड only in Hindu, कि हिंदू को डिवाइड करो। It should, your purpose should be that. Blames everyone, blames everything from those who left to EVM machines, to corporates, to the media, to dictatorship. Yes, yet they're able to call someone a dictator. I've never heard of a dictatorship in which they're able to call the alleged dictator a dictator. So I wish the party the best, that's what I'm saying. And I don't want them to improve now. I've left the party. I have no stake in them improving. If they continue to have their head buried beneath the sand, they will perish. And a party which once upon a time had 400 plus seats in parliament is now reduced to 1/10 that number. See, then is that the blame of people who left the party, or is that something wrong in the direction What's the fact that your party, or what's the the fact party be so brazen, or tomorrow the party may be so what's the brazen fact that your party has blamed decided not Indians, to? tomorrow the party may blame the Indian voters. Was the fact that your party decided to boycott the Pran Pratishtha Ram temple at all a consideration for you? Because you have today also, you first went to Siddhivinayak temple, prayed there. Is there a sense that you believe that the party has, you say, been taken over by corporates, or has become anti-corporate and is moving too far to the left? Is your sense that the party also is not in sync with popular sentiment on issues like the Ram temple? Look, not being in sync with popular sentiment or being in sync with popular sentiment is just doing something for the sake of being in sync with popular sentiment to get votes is an example of opportunism. Of course, I was upset when the party rejected the invite to attend the Ram temple. I find it ridiculous that the party did that. When you say you went to Siddhivinayak temple, I don't know what that means, by the way. I go to Siddhivinayak temple every time I embark on something important in my life. Siddhivinayak temple for us in Mumbai and Maharashtra is a significant place of worship. There's nothing, I don't have to wear Hinduism or my religion or my faith on my sleeve. But the Ram temple, which the Supreme Court has settled, a matter of faith and devotion to hundreds of millions of Indians, and the way that the party drafted that statement, as I said, I wish them the best of luck. I don't know how the party is run anymore, and frankly, it baffles me when I hear these things. I think that there is being a little delusional in life may be good sometimes, but being completely delusional is very dangerous, and that would be my message to my friends in the Congress. So I went to meet him as a newly elected MLA, and so he was like completely clueless. So how many MLAs do we have in UP now? You know, and I was like, sir, 7. You know, and he threw his head back and laughed, and I was like, he doesn't know. He doesn't know, and he's laughing. Can you imagine that happening in I can totally imagine it, No, but can you imagine that happening in our party? Well, You just don't know that you have like 7 MLAs in a house of 4 and throwing your head back and laughing. Smitaji, except for few people in media, nobody thinks Rahul Gandhi is well read. Not even Barack Obama has written it in his book that he came off as awfully trying hard to impress but not able to do so. You know, recently He trained under Lee Kuan Yew. Well, you know, I think they should not say it in honor of that great man. He internship kiya hai. He has trained under him. Whoever he interned under these days, he's interning under Yogendra Yadav ji and of course Sudhindra Kulkarni ji. So good luck to them and to him. वो भी तो बीजेपी से निकले, वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में थे भाई सुधींद्र जी. And Sudhindra ji was once a leftist, then a rightist, then a leftist. So let's not go into that. You know, when No, why not go into that? No, we will go into that. But before that, just one point. Forget everything else. Rahul Gandhi recently said that MRP means minimum retail price. Can you believe this? Yeah. You know, he said that look, if this is the price on this means that the shopkeeper who is there, he cannot sell it below this price. He has to sell it above this price. Even my 5-year-old cousin would know that भाई चॉकलेट लानी है तो वो चॉकलेट जो है वो अगर 5 रुपए की करे तो शॉपकीपर का चार्ज अबव 5 रुपया. 5 रुपए के नीचे का डिस्काउंट देना है, बेटा बहुत प्यारे लग रहे हो ले लो 2 रुपए में तो दे सकता है. But he thinks, Rahul ji, he's obviously clueless that he had 7 MLAs and he thinks that it's minimum retail price. He said मनरेगा माफ नहीं किया.
He says, and I'm not nitpicking on him. Look, everyone makes a gap in a political speech. कभी किसी के मुंह से कुछ निकल जाता है. ऐसा नहीं है सब लोग जो public space में थे. But to have the presence of mind, to be able to understand the issues and to evoke confidence in somebody. Can you evoke confidence? He said Aishwarya Rai was at the Ram Mandir प्राण प्रतिष्ठा आप थे ना वहाँ पे. ठीक है ऐश्वर्या जी. और ऐश्वर्या जी को नाचने वाली अपने ससुर के साथ अमिताभ नाच रहे थे उसके साथ नाच रही थी. Who speaks like this about women? But this is what I'm trying to say is that associated with for more than half a century. Razi, thank you for having me on. You've been covering the Congress for a long time, and you knew my late father as well. The Congress party that I joined in 2004 is fundamentally different from the Congress party of 2024 in many ways. Its approach to politics, its way of dealing with its human resources, its organizational capability, its approach to issues, its role as a opposition, constructive or destructive, all of these are things which have fundamentally changed in the last few years. I stayed in the party I stayed loyal to the party during its most challenging decade from 2014 to 24. I had no post. I was made president of the Mumbai Congress barely 20 days before the Lok Sabha elections. I had no role to play in candidate selection. I was told these are the 5 candidates in Mumbai. Go out and campaign for them, help them win. I hadn't even moved a chair in that party office. And a few weeks later, after the victory, I was asked why I didn't resign. After the loss, I was asked why I didn't resign. And I readily resigned. I readily accepted responsibility. I said, no matter the fact that even though I was made president of the party barely 20 days before, I will resign. And I believe that if I was accountable, and I was willing to take accountability for no role, for no responsibility, or fault of mine, I have every right to demand accountability. But each and every time I demanded accountability, I was the first person in 2014 who spoke about the fact that the party must introspect. It must have better advisors. In 2019, when the party was looking for a new president, right in the beginning, before the election happened, when Kharge got elected, I suggested the names of 2 young people. My tweet is on record, you can go back and check it today. Those statements of mine were treated as revolt. I still stayed loyal to the party, despite being sidelined, despite being punished. For what? For giving constructive suggestions. For giving my best 10 most productive 10 years of my life, from the age of 37 to 47, which I am today, to the Congress staying loyal. But there has to come a time where a person has to decide what their purpose in politics is, and why you enter this profession for the first time. And I had a very hard time understanding and accepting that, and I realized that for me, politics is about getting something done, about performing and delivering for the people of Mumbai, for the people of Maharashtra, for the people of India. My politics, Rajdeep, in the last 10 years, not once have I made a personal statement against anyone in government, against anyone in any other sector. It's always been constructive. You can criticize on policy, you can criticize on ideas, you can give constructive suggestions sometimes. If the Prime Minister talked about Make in India, give a constructive idea. Why dismiss it? And I found that suffocating, where the only objective, where 99% market share of the party is negativity and not positivity. Unfortunately, that is not the politics I was raised seeing from my father. That's not what I saw politics as. And it reached a point where it was just too suffocating for me. And I had to take a decision.